नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वार्म वेलकम गाइस। हालांकि ये स्टार्टिंग ये टीजर मैंने कल ट्विटर पे भी डाला था, बट अभी जब बैठे हुए मैं खुद देख रहा था, आई आई जस्ट गॉट अ लिटिल बिट मोर इमोशनल, वेरी सैड। इट्स वेरी 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 डिसहार्टनिंग राइट नाउ जो हो रहा है जिस तरह से, बट एट द सेम टाइम इस सेशन में ऑब्वियसली द प्लान इज टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट अदर थिंग्स, बट एक बार फिर से मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 स्टे स्ट्रांग, स्टे पॉजिटिव। COVID is real, no doubt about it. COVID is very real. COVID is really uh, taking away a lot of lives, but at the same time, uh, I think it's high time we start being be we start we have to be positive around this. Uh, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्टेड इसलिए भी क्योंकि जस्ट बिफोर दिस पर्टिकुलर लाइफ, जस्ट एक मिनट पहले आई वाज एक्चुअली ऑन अ कॉल, उसी वजह से मैं 2 मिनट लेट भी आया, बट आई वाज टॉकिंग टू प्रशांत। आप लोग जानते हैं प्रशांत को। प्रशांत की रिपोर्ट आई है एंड ही आल्सो हैज कोविड. Couple of his family members have been tested as positive. This is really, really sad and this is really heartbreaking. But as much as I know, he is a very positive man. He is a very strong person, and I know for a fact he he will definitely come out victorious. We will definitely pray for him. मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा प्रशांत के लिए, प्रशांत की फैमिली के लिए, पूरे इंडिया के लिए प्लीज प्रे करें, प्लीज। प्रेयर्स में बहुत दम होता है एंड let's definitely do that. So I would encourage all of you to please spread positivity, and there are so many things that आप लोग कर सकते हैं to be distracted. जितना आप इसके बारे में नेगेटिवली सोचेंगे उतना ही ज्यादा ये नेगेटिव एक्ट करेगा आपके ऊपर. So I would encourage you all to please be very positive, be strong, and face it like a fight, like a battle, and be a warrior, be a genuine warrior. This is your time to be a genuine warrior, and let's kick out COVID out of our country. At the same time, like I said, there are so many things that you could do to be distracted. And maybe I could give you a couple of tasks as well. जो लोग COVID में है and they are required to be quarantined, either self quarantine, yeah, you're in the hospital and you don't know what to do, because अगर आप अपने दिमाग को busy नहीं रखेंगे तो obviously you will keep on thinking. Then do certain things. अगर आप कोई art करते हैं, please make some art pieces for Sushant. Make some music, sing a song. अगर आपकी हालत थोड़ी सीरियस है and you cannot due to breathing issues, then at that time just watch certain things which are positive, and I'll be more than happy to share certain things. I'm going to post a lot of positivity on social media as well. Let's spread positivity. This is the need of the hour. This is a very very difficult time, guys. This is what makes me so sorry for your loss, Rafael. Imagine 8 members of the family. This is really yeah, please stay positive, guys. I had a total different energy level when I thought of setting up this particular live, and now I'm in a totally different mindset. But you know what, life goes on and life definitely moves on, so I will definitely keep praying. Let's see if we all can do whatever we can to help others. On the good side, Ramanji's mother is doing pretty well, and I'm sure Prashant's family will also be out of it very soon. Yes,
Absolutely, absolutely, Pooja. Talk to your mad friends. Comedy. Dekhein. Let me do this. Let me bring someone in the next few days who could make us, a little light. Common man, if you're listening, if you are watching, or if you watch later, I think it's time now. I again, Rafael, I can't even say that I can feel your pain. Nobody can feel your pain. Nobody. I think this is uh, this is really, really very heartbreaking. So yes, let's just keep on praying and let's just keep on talking about other things. Yeah, please stay strong. Oh wow, guys, this is turning out to be really, really, really sad and really shocking. Ashish, again, heartfelt condolences to everyone. Um wow, Arun, yeah, this is really sad. This is really nice. Yeah, yes, Vasav. Any update on SSR case? The case is definitely going on. There are no major updates, as you all can see. कि Mumbai में क्या चल रहा है? A lot of, uh, I would not call it distraction, but yes, the focus has shifted. uh, and people are now talking more about COVID, and they're focused. The courts, everything is kind of on a lockdown. So please, 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 everybody, let's. While we definitely want to focus on Sushant's case, at the same time, there are people who are, making this as a business and minting money, on Sushant's name. चाहे वो किसी भी तरह से हो, तो I think we will talk about that in the last uh, you know few minutes. I don't want to waste time on that. uh, yes, I completely agree with this statement. Let's try and give positive news and stop watching any kind of news which is uh, yeah, just close your eyes and think about Sushant. You will feel positive. That's what is happening, and that's what at least I am also doing. You know I listen and I try to kind of get distracted. But अभी जैसे मैंने बोला, live आने से 1 minute पहले I kept the phone and I clicked on the live button. So for me, the transition time was even negligible, a couple of seconds. So I pray for you. I really pray for you, Prashant, your family, everybody who's been tested corona positive, and I really pray to God कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए. Oh man. All right. You know what? I think I have to. I have to get on to the other things. Uh, हमारे एक शो पे सोमी आती हैं, which we do the session, which is Know Your Heroes. She also just pinged me. Even she is tested positive, so I have no clue कि हो क्या रहा है. But this is really heartbreaking. This is heartbreaking. Yes, Kaminiji. So yes, on a positive note, thank you for bringing this up. Sushant has been remembered by the Oscars. A great, great update by Vishal Kirti today. And according to that post, Mayuresh was kind of behind this. So something positive, right? In the midst of all this, you know, will speak. Sorry. So as I said, this will be a very distracted session. Anyways, more than 90. So another good news: more than 90 hospitals to have their own oxygen plant by end of this month. So I think this has been really, really crazy. Looking at how the oxygen supply has been and what people have been talking about. But I think slowly and steadily everything is publish the COVID requirements. Does your website equip to enough publish the COVID requirements, oxygen beds? I can try data. I can definitely try. I will work with somebody and to see, and maybe I should talk to you and let's see if what we can do around the website. All right, now let me get back to the topic, why we were here. Before I do that, I definitely have to do this. The views and opinions expressed on this channel, and specifically this particular session, are my personal opinion. And if any panelist joins, it's their own opinion. And I, in that case, do not necessarily reflect
the official policy or position of the channel or myself. So if somebody joins and says something on the topic that I'm bringing up today, then it is their own personal judgment, their own personal analysis, their own personal view. So I really want to be very clear about this session. I don't want to kind of get into any kind of entanglement. Now, on the topic, as much as we know, everywhere, especially in India, mein, COVID is has taken over everybody's minds, everybody's thoughts, and actually, it has just shut down the entire operation of our country. Uh, इस चीज का फायदा उठा रहे हैं वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर भी potentially or they might be involved. The reason I say that is I have started seeing a lot of people, specifically in the political arena, coming out and doing certain things around COVID now, all of a sudden. Not all of a sudden, I would say, because this individual that we're going to talk about, and I'm going to just use the word penguin because I don't want to name or use anything like that. This particular penguin, has been quiet. He was COVID positive, or uh, been out of action for a while, and now all of a sudden we see a lot of activity. Uh, More than him, I'm shocked at these channels. Uh, these channels are supporting, uh, a lot of this hypocrisy. Uh, so I'm really, really surprised to see, NDTV giving a platform, and then the way they executed this interview. So I'm gonna just, share a screen because I cannot play this video for sure, but I will leave it up to you to go and watch it. The reason I want you to do it is not because of the video. Even if you give them view, that's fine. It doesn't matter. Let me share my screen. And okay, so I'm gonna keep myself out of the screen. Here we go. So go on YouTube, and on that there is an interview that happened about a couple of days back on April 18th, supposedly, uh, and it says NDTV Solutions Summit. Now, I haven't followed this channel that much, and I don't follow this particular series, which is the NDTV Solution Summit. And first of all, before even I start, thanks to I don't want to name that individual who sent me this. Uh, I really appreciate you sending me this particular video because I was myself shocked to see what is happening in the chat. I was really appalled. I was really annoyed, and I'm really angry to see this is what is happening. Video to itna well executed video hai. I'm gonna show you who are the hosts. So the two individuals sitting on the screen, if you see these two individuals who at least I had some respect. Anyways, they executed it very well. This guy on the left started with English, and the lady in the right on the right in Hindi. क्या करने के लिए आए थे? For some summit, solutions summit. So as the name suggests, I thought this would be all in English first. They executed it so well that they wanted to showcase that the guy in the middle is able to showcase some kind of smartness, या कोई चीज ऐसे दिखाए कि he's like one of the smartest people, somebody who is really well versed with the condition, especially COVID, and the way he was given everything, the information that he was given, and the way he fed it, ऐसा लगा जैसे कि उसको सिखा के पढ़ा के और भेजा गया है ताकि लोगों को इम्प्रेस कर सकें. Now the reason why I'm bringing this up is the same guy, when whatever he did, यहाँ पर chat में मैं comments पढ़ के I was shocked. Everybody is saying quite impressive, straight to the point. I like his approach. Best wishes. You look at it,
एक तो ऐसा भी था, स्टार कुछ कह रहे थे, राइजिंग स्टार, कीप इट अप, इम्प्रेस्ड बाय योर नॉलेज एंड स्टाइल, नाइस, वेरी नाइस टू सी, फ्लुएंटली इन इंग्लिश, excellent English, Hindi, and knowledge. India needs educated public to come in place. Just keep on reading all the chats and you will be shocked. Okay, imagine this guy, and then there's a lot of appreciation coming for the NDTV channel. I am impressed with the. I have been following since few days, and I'm amazed with the quality of journalism and whatnot. And then it keeps on continuing. ये कहाँ से आए हैं ये लोग? What is happening? I was shocked to read all these comments. Again, I haven't gone through the entire list because there are about 500 plus chat messages. You click on anything. ये, how is that even possible? How is that even possible? Okay, there is not even a single negative comment when there is so much nonsense happening in Mumbai right now regarding COVID. Up, matlab, you read any message and you're like, really very good, Aditya, Jai Maharashtra, really admirable. What is happening here? First time I'm saying the assurance is great. I wish him the best. God bless. And it goes on and on and on. Tiger of Shiv Sena. So this is, I mean, if you click on any of other channels and if you go to any of the videos, किसी actor के भी हो, किसी politician के भी हो, कुछ भी हो, you get negative comments, and let me just quickly glance one more time. Out of the 64,000 people who watched, about 1,500, 1,400 likes and only 152 dislikes. Really? And what is happening? Itni positivity, itna zyada positivity for this particular person who has been famous for a lot of things which are wrong. Recently, someone told me the story why this name came about. कि penguin क्यों बुलाते हैं? And I was shocked कि इतना डम भी कोई हो सकता है कि penguins को एक जो कि एक ऐसा एनिमल है जो बर्फ में या कोल्ड में रहता है, that is really really okay. तो यहाँ पर भी आ गए हैं हमारे भी चैट में. There are people who want to dislike and and say a lot of things, but I've just blocked one. Anyways, so that's what I'm surprised कि यहाँ पर nobody sent by left-leaning supporters. Okay, let me just get this. Congress, they won't comment anything negative about Shiv Sena because Shiv Sena is now Sonia Sena. Right. Again, end of the day, okay, a lot of people want to join. Sure, guys, I will give you the link. And let me post it here, as well as I will ping anybody who wants to join on the WhatsApp. जो मुझे chat कर रहे हैं, I will. The other thing I really want to talk about is, okay, guys, it's high time. It's really, send the link. Okay, sure. I'm gonna post this link right now, and I would love for you all to show some Sushant love. That's what I want to call it. Okay, I've copied it, and here it is for you all. Please go ahead and show some Sushant love to this. इतने ज़्यादा paid. Let me just take few people. I see few people join as well. Okay. Hello, Sachin. Hello, Akshay. Yeah. Hello, Hi, sir. Varun. Hello. Varun, I mean, what is the name of the news channel? NDTV. I mean, is it surprising? The surprising thing is the comments, right? क्योंकि NDTV is not a copyright. Video पे वो कुछ भी कर सकते हैं. What about the comments?
How come? Everything is controlled by them. Everything is controlled by them. Negative comments ऐसे ही delete कर देंगे वो. See, it is same like movie trailers. ये आजकल आ रहे हैं ना Bollywood के movie trailers. Yeah, Same like that. right. I mean, बेबी पेंगुइन आया था ना यहाँ पे. Yep. ये जो इंसान है बेबी पेंगुइन बीच का, ये हाथ जोड़ के देखिए कैसे भीख मांग रहा है. भीख मांग रहा है, क्या कर रहा है ये? कुछ भी कर रहा है. कई बार रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़े बड़ी हाँ, बात. क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? Yeah, कि क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? टेस्ट करवाओ. ये वीडियो सुनना. टेस्ट करवाओ. And the way this was executed was right. एक इंग्लिश क्वेश्चन आता है, एक हिंदी क्वेश्चन आता है. ये दिखाया जा रहा है कि he is so articulate, he can speak in any language you want him to. और उसी को ट्रांसलेट करके कमेंट्स डाले गए. और आप ये देखो कि कमेंट्स के ऊपर लाइक्स देखो जरा. I mean, I was really looking at this from a very detailed. मतलब कोई कमेंट भी लिख रहा है तो उसके ऊपर 81 लाइक्स भी आ रहे हैं. उसके बाद 85, 89. एक्चुअली इमेजिन. जो शिवसेना है सर, उनके इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, तो वो जो भी उनका नेता है जब भी कोई इंटरव्यू देता है तो द लिंक गोज ऑन इन दोज व्हाट्सएप ग्रुप्स. एंड इंग्लिश तो उनको समझती नहीं है तो बस जाके लाइक करना उनका एक ही काम है. उनका व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं वो लोग, एंड दे जस्ट गो ऑन द लिंक एंड दे जस्ट लाइक इट. और कमेंट भी सब देख लो आप, मतलब कमेंट एंड व्यूअर्स का रेशियो देख लो, 65,000 एंड 1,500 कमेंट्स. तो एक तो वो वीडियो सिर्फ उनके ही लेफ्ट लर्निंग चैनल है, वो उसको कोई देखता नहीं है. उनके ही लोग जाके देखते हैं, उनके ही लोग कमेंट करते हैं. मजा आता है उनको कि सब अच्छा चल रहा है. उनका एक कुकून है सर. Varun, can you imagine? This is the same NDTV which used to troll Bala Sahib Thackeray ji during his heydays. This is the same NDTV which used to say a lot of nonsense things about Bala Sahib Thackeray ji. In fact, Sachin sir, one of their journalists has in his interview with with Bal Sahib Thackeray, she has said that are you mad? Are you mad? This video is available in YouTube. I mean, can you imagine what these two son and his CMG and his son, how they have changed the entire landscape of Shiv Sena. Right. From Hindutva, they are. I cannot even imagine. I mean, they have left Hindutva completely. I don't know if any Hindu believes this party is the biggest fool born on this earth. We say Imran Khan takes U-turns, but here it is. This is the in our biggest own U-turn backyard. in Indian politics. Let me tell you. This is a 360 degree. Absolutely. Right. They have backstabbed Hindus. I mean, Bal Sahib Thackeray is the one who said that I'm proud of going to Babri Masjid, and he says that he said that openly in NDTV, I think. ये हाथ नहीं पाव था तोड़ने में. Yeah, and these guys are literally eliminating the legacy of Bal Sahib Thackeray. Sir, actually, and this guy has no real standing. He was elected from a Shiv Sena stronghold seat, Bandra. A sitting MLA was removed from there. So he has no credibility of his own. He is just there in the cabinet because of his father, and that too, although three are together. So he does not have real standing of his own. But they are trying to make image makeover, and like Rahul Gandhi's image makeover has been done by so many times. I mean, at least Rahul Gandhi, we can imagine, because the Congress party has a history. At least they have not changed their party. These people have done a total 360 degree turn. Right. Yep. And sir, one more thing, like this other guys who are now going on to make world records and everything, they have no word to talk about this Maharashtra government because already they are on bail from Maharashtra police. They have no guts to take names like Baby Penguin. In fact, yesterday one person asked him that whether there is role of Maharashtra government or Deshmukh in this. So he's like, no, there's no role of him. He's so afraid to take the name of any of ministers of Maharashtra. And yeah. Abhi, halaki, I see Venki as well, but you've taken me right into the second discussion, which I really want to. पहले तो मैं इससे पहले कि मैं उसके बारे में बोलूं, Venki, anything you have to say about the screen that you saw around NDTV?
Yeah, that was yeah, as you say, it is all paid media. I don't know how they have the guts to come and no, no, somebody was talking about this party and comparing it with Congress. uh, how can you say the INC is the original Congress? It had split n number of times. Even great stalwarts, they themselves walked out. For that matter, somebody spoke in the parliament. I saw the video, and even in 1927, Motilal Nehru himself walked out of the Congress. So how the hell do they claim INC is the original Congress? So this is all hoodwinking, and this is their last straw. That is what I feel. The whole target now is before BMC elections. जो करना है कर लो, because they themselves don't know. And as he says, these are all bots, all bots. They have their own That's likes what and this. most of the people are saying, right? I mean, now they checked Exactly. into some of the IDs, and Yeah, they're yeah, thinking these were just created before, or around the session time. So yeah, just to show positivity. So imagine yeah, this yeah. is how they want to kind of showcase, Uh, their supremo. yeah, I just received a message. Some newspaper, the Australian, I don't know, some nondescript thing. It Uh, carries a headline: Modi leads India into a viral apocalypse. Some nondescript. So they are just. And one more thing to be noted: with US, the entire thing was settled between the NSAs. mhm. Yeah. Neither the prime minister or even not even the foreign minister or not even the foreign secretary. Between the NSAs, things have been settled. So you can imagine what would have transpired. So एक तरह से अगर हिंदी में बोला जाए तो औकात दिखा दिया उधर, जिनको जिनको औकात दिखाने हैं दिखा दिया, और कोई तो इधर से वहां बैठी है, उसको भी अपना औकात दिखा दिया. तुम किधर बैठ पे कुछ कुछ भी हिलाओ, you just cannot do a damn thing. So that is a real message. Was really happy it was between NSA and NSA. And all said and done, Hindustan Biotis is we don't even want your raw materials. We are going to be Atmanirbhar. We will tell the world. Covaxin is going to hit the world like anything. That is for sure. Across the Yeah. region. Yeah. Carry on, Varun. No, Right. absolutely. No, thank you for the comments. Yes. I just Yeah, want to Varun, state before two I to forget three my point, I positive wanted to things. make this point. One Uh-huh. second, Akshay, one second. Please, Yes, yes, with your permission. Bolo? Yeah, with your permission, Akshay. Yes. What? Please, yes, please, Yeah, yes, yeah. yes. please, Please go on. What I want to say is, please go ahead. I mean, Narayan Srane's son Nitesh Rane, he in every news channel. This is on record. Huh? We are not making it up. This guy, this baby penguin, out of 7 days in a week, 6 days in a week, is only at Dino Moria's villa or farmhouse or whatever you call it, doing stuff. You can understand what I'm trying to say. Uh-huh. And this guy was promoted as the CM of Mahavinash Agadi. The Acha. actual plan was to make this guy the CM. That person, who is out of 6 out of 7 days, was at a flop actor's house who was allegedly to be a drug peddler. Just imagine if this guy would have become the CM. I mean, what kind of example this people are setting? I mean, frankly speaking, Maharashtra people, I don't know why they're keeping quiet. This is the worst dirty politics that Shiv Sena has ever played. Going into the elections, seeking mandate with the help of Modi ji, and the mandate was actually given for BJP plus Shiv Sena, where BJP got 105 seats, and these guys only got 50 to 50 seats, and then backstabbing them and going with the enemies just because you want to become CM, and after becoming CM, what you have done? You're not able to control COVID. You have left the state. Has he visited? Has the CM visited even single hospital during this COVID times? How many patients he has visited? How many oxygen cylinders is he providing by himself? What has he done? I mean, if any questions are asked, that naughty uncle comes out and abuses everyone. In fact, Sachin sir, when he was asked, Aditya Thackeray was asked about what are your future plans for Mumbai, he said that I want to keep Mumbai 24 hours open, and used to always talk about nightlife. And I would just want to ask one thing: what is open in night? Alcohol shops and those dance bars.
and you have policemen More from their vasuli, right? party. More Vasuli. vasuli. More Exactly. vasuli. More Like vasuli. this is like It's just if like, you yeah, connect those two things, like why he wanted Mumbai 24 hours open, because more vasuli he wanted. So he correct. is. ऑब्वियस ना, वो तो वही सपने देखेगा जिसका वो यूज टू है, मतलब ही इज यूज्ड टू दैट लाइफ. व्हाट कैन यू डू? Right. Yep. I just Okay. want to add 2 to 3 good things, positive things. I have already commented in the stream going on. I had commented, but I want to say that 8.6% of India's population, that means almost more than 11 crore, have been vaccinated at least once. And as I had put it in the chat also, that 90 hospitals are going to get their own oxygen, making machines by the end of this May, and all the funds are being getting transferred from PM CARES fund. So all those who are after PM CARES fund and we want audit and all those things, please just go and follow news. Even the Hindu, which is left-wing newspaper, has put this news. Just two good things I had to say. All right. No, thanks for sharing, bringing some positivity. But going back to what you started off with, okay? One of the things that you brought up about these fake news peddlers, which was the Yes, second yes. topic. Let me show you guys something. Again, without naming who this person is, I really appreciate people taking time, and that's what I say. कि जो लोग इस time पे, unfortunately, they are COVID positive, and they're looking for something, guys. Do some kind of research on some of the fake people around us. The reason I say that is you will find so much details around them, and we should continue to expose them. Now, before I share my screen and show you something, uh, one thing which I have to say, a lot of people are questioning me. A lot of people are not lot, sorry, I take it back. A very few set of people who are, followers of this fake news peddler are questioning me that why am I spending my time? I should just ignore. I'm creating a lot of mental trauma or whatever. Yes, I will continue to do that, and I'm wasting my time, to be very honest. I should not be wasting my time on such things, but the reason I'm doing it is there are people, very simple, very honest, very gullible, very naive people who don't understand what they're getting into. It's just not about money, guys. ये सब कुछ पैसे से नहीं रिलेटेड है. यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है, इतने बड़े लेवल का कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे अभी. और अगर अभी इस चीज के बारे में एजुकेट नहीं किया गया, अगर आपको नहीं बताया गया, you will fall into this trap. You will get your families into trouble. You will get your entire कहते हैं ना generation into trouble, because you will be sharing your personal information with these scamsters. These scamsters have been doing it for a very long time. मैं कोई न्यूज पोर्टल नहीं हूँ, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई पुलिस, ना मैं कोर्ट, ना मैं कोई जजमेंट यहाँ पास कर रहा हूँ. मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है. आई एम गोना एक्सपोज थिंग्स. I'm going to bring forward. Let me not just use the word expose also. I'm going to bring forward certain things. You guys need to make sense for yourself. You need to make your own judgment कि ये जो awareness मैं create करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कितना जरूरी है आपके लिए. Now, let me share something. These are screenshots. Thanks to this amazing individual who has sent this. Give me 1 second. Who has sent me these screenshots? Again, I don't want to take any credit for this, because this amazing individual spent his time or her time into getting this done. These are not the entire set of screens, because once we get to a point, uske baad you have to move forward with the actual registration. Now, here we go. Let me just get myself and everybody out of the screen, and let me show you something. Okay, guys. So basically, this new website जहां पर रजिस्टर करने के लिए आपको बोला जा रहा है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि आप रजिस्टर करें, अपनी डिटेल्स दें. बड़े सिंपल क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैं पूछना चाहूंगा, और आप बल्कि इसको देखें और इवैल्यूएट करें कि what is the need of all of this which is happening on this portal? What is the reason behind it? And thanks again to this individual जिन्होंने मेरे को भेजा. सारी स्क्रीन्स नहीं है, जितनी है उसके हिसाब से I'm gonna talk to you. पहली स्क्रीन obviously, hi there, your first name. चलो
ठीक है, फर्स्ट नेम आप मांग रहे हैं बिकॉज आपने रजिस्टर करना है, दैट्स फाइन. Then I think if I'm not wrong, I don't know where's number 2. Okay, last name. चलो last name भी ले लो आप, first name last name obviously certificate देना है आपने. ओके, अगर ये क्राइटेरिया था तो दैट्स फाइन. यू आर आस्किंग फॉर द यूट्यूब चैनल. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट, and I hope this is all right. Now, why do you need this? What does Twitter handle have to do with this record? What are you trying to do? Are you trying to siphon all the private information for every single individual? Why is that even required? I don't see a reason. ओके, चलो आप ट्विटर हैंडल मांगते हो. ट्विटर हैंडल मांगने के बाद आप फेसबुक आईडी भी मांग रहे हो. किस लिए? व्हाट इज द नीड फॉर द फेसबुक हैंडल? आई मीन, एनी सोशल मीडिया यू आर ऑन, व्हाट इज, व्हाई डू यू नीड इट? आप तो रिकॉर्ड बना रहे हैं, राइट? एंड इट्स अ जेन्युइन रिकॉर्ड एज पर योर स्टेटमेंट. दिस इज अ जेन्युइन रिकॉर्ड. ऑल यू नीड टू नो इज हु जॉइंड दैट स्ट्रीम, पीरियड. Nothing more, nothing less. Who joined that stream? वो stream जब join करेंगे, if I'm not wrong, you only have two options कि या तो आप एक YouTube वाले ID से आएंगे या Facebook से आते हैं. Most of them, as per your guidelines, will be through YouTube. आपको Twitter handle भी चाहिए, आपको Facebook handle भी चाहिए, आपको YouTube handle भी चाहिए. Pretty much you're covering all the aspects किसी individual की private information को लेने का. And then you need the mobile phone. And why would you need that? If you could, and this, you are making it as a mandatory field. Can you please explain why? Why would you need somebody's personal cell phone or landline number? Why? Any reason? बाकियों को आप अगर बहाना भी बना दें आपके लिए, अगर मैं इसको दोबारा इवेल्युएट करूं, this should only be the one which is mandatory. सिर्फ YouTube. और आप लिख भी रहे हैं. अब अगर इस वेबसाइट को मैं अब इवेल्युएट करूं, again, let me just put it very clearly. I just mentioned something. Again, I'm going to repeat it. YouTube channel के ऊपर, if somebody is trying to join, will only do through two options. Either you need to have a YouTube ID, या YouTube पे ऊपर आप लॉग इन करके ऑथेंटिकेट करके आएंगे, या second thing is you come through a Facebook. If that is the case, अगर आप इसको मैंडेटरी बना रहे हैं तो Facebook मैंडेटरी क्यों नहीं है? आपको पार्शली मैंडेटरी करने का क्या मतलब है? और अगर कोई YouTube से नहीं आके Facebook से आ रहा है तो वो यहाँ क्या करे? Are you forcing them to create a YouTube ID so that you can track their Gmail? Then आप फोन नंबर क्यों मैंडेटरी कर रहे हैं? That is another bigger problem. Why do you mandatorily need my cell phone number with the country code? You need to know where I am, exact location. उसके बाद आपको पूरा एड्रेस भी चाहिए हमारा, जो भी इस पे रजिस्टर करता है. What the hell is happening, guys? I mean, कुछ रह गया इसमें? Anything else left to आप बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नहीं, बैंक अकाउंट भी मांग लेते. वही मैं कह रहा हूँ. आप मेरा बैंक अकाउंट भी ले लो यार. आप बैंक अकाउंट मांगो और पैसे भी ले लो. Give me 1 second. Let me. एटीएम का पिन भी पूछ लो. क्या एटीएम का पिन क्या है? हाँ, अरे मैं बताता हूँ आपको अभी. तो 1 मिनट. I think I did not download all the screenshots. Oh yeah, this one is again. I forgot. My bad. This is another amazing screen which I should have shown you. Let me just first download this. अभी तो आपको मैं, when I show you all this thing, yeah, I'm sorry, I did not download all the screens. अभी तो इसके अंदर और भी screens है. And again, these are the screens जहां तक ये जा सकते हैं हम legally without registering. Register के बाद तो मुझे पता ही नहीं क्या होगा. Okay, let me. Okay, just look at this screen. Before you proceed to submit, you understand that there would be no refunds and that you agree to these conditions. अभी मैं
I'm gonna get these terms and conditions also, and the privacy policy also. I want to read them. Varun, one small question I want to ask. Huh. Is there cashback policy? It is what? Is there a cashback policy here? Oh, Is there no a what refunds. policy, sorry? Cashback, No cashback. refunds, cashback. नहीं, जब नो रिफंड है तो कैशबैक क्या है? 400 रुपए दे रहे हो तो 4 रुपए तो कैशबैक आना चाहिए मेरे। Okay, let me finish it, then we'll kind of grill or drill or whatever we want to do it. Okay, Yeah, right. ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा कह रहे हैं कि आपने अगर पैसे दे दिए किसी भी तरह से, तो आप कुछ भी कर लें, केस फाइल कर लें मेरे पे, जो मर्जी कर लें, मैं तो भाई नो रिफंड। ये तो आपने जब रजिस्टर कर लिया या आपने साइन अप कर लिया, नाउ आई नीड टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस। सो if somebody can get me the terms and conditions, and if that person is watching or listening, so please WhatsApp me. I would love to read the terms and conditions and the privacy policy as well. And अपनी कंडीशंस तो दे दी भाई साहब कि भैया हम तो पैसे नहीं वापस करेंगे, ये तो आपने साइन अप कर दिया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जो है वो भी कुछ लिंक डाल दिया है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि कोई इसकी भी अगर मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे, दैट विल बी ग्रेट। अच्छा, यहाँ ये खत्म वरुण, वो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो भी है, मैंने एक्चुअली उस वेबसाइट पे क्लिक किया था। हाँ, तो इट वेंट टू सम अदर 4-5 वेबसाइट्स। And also, I want to say that this International Book of Records is based from Delhi, very near to that guy's house who lives in, I don't know, Patel Nagar or something. And they both, I guess, they both are involved in conning people. It is based in Delhi, just near to his house. He knows that guy who is the owner of International Book of Records. अरे अभी तो let me just Paji, if you are watching and listening, if you can join, I would love for you to expose something on that front as well. You all will be shocked, guys, कि ये हो क्या रहा है और मुझे कहा जा रहा है कि मैं इनके ऊपर प्रेशर कर रहा हूँ। अरे अभी तो प्रेशर शुरू है बॉस। तुम लोग जब तक लोगों को बेवकूफ बनाना बंद नहीं करोगे ना, मेरे जैसे बहुत वरुण उठेंगे। अभी तो एक और जो स्कैम चला रहे हैं ये लोग मेरे अगेंस्ट के, वरुण कपूर नहीं है और वरुण सिन्हा है। These idiots are really screwed up, man. Varun bhaiya, I just want to add those people. Hello. Yeah. I just want to add that मेरे exams postpone हो गए and a lot of friends like me who are debunking his theories. Don't worry, we are with you in this. Because exams 2 महीने लेट है, अब तो क्या उसके चैनल पे हम जा के उसकी एक चीज नोचेंगे, उसके सब scams निकालेंगे बाहर. Yeah, go ahead. Yeah. So, Varun, just I want to add one point. Yeah. I forgot. Okay. अच्छा, अभी तब तक let me just finish it. You guys more than welcome. इसके बाद मैं चुप होके सुनूंगा बॉस, क्योंकि मेरी अभी बस हो गई यार बोल के ना। मैं I think I'm gonna be on the quieter side, but I'm not gonna leave these guys like that. ये लोग ने जो मजाक बना के रखा हुआ है लोगों को बेवकूफ बनाने का, तो जिन लोगों ने ये कर दिया है, राइट, जिन भी लोगों ने, I am really sorry, I'm really sad to tell you that आप लोगों का बहुत ही गलत हुआ है ये आपके साथ जो हुआ है। And okay, let me see if I can open this. Yeah, Varun, I want to add this point before I forget, that this is the same guy who is saying that SSR is alive, and in the same sentence is saying that justice for SSR murder. I mean, in the same sentence, he's using these two narratives. SSR is alive, and we want justice for murder of SSR. I mean, does it even make sense? The people have to think, does it even make even an iota of sense? Can you say SSR is alive, and in the same phrase, can you say we are fighting justice for the murder of SSR? Does it even make sense? I want to ask to people who are here, commenting or anyone, or people who are actually gullible and falling to this, whatever it is. Okay. Does it make sense? Yeah. Okay. Let me add somebody else as well who might be able to share more updates. But Gurpreet, just hold off, okay? I just got the privacy policy and terms and conditions also. So terms and conditions पढ़ते हैं जी थोड़ा सा, again let's, वो कह रहे हैं ना, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़ा सा लाफ्टर, थोड़ा सा
वो करो, बेसिकली चीयर स्प्रेड करो। तो ये अब लाफ्टर सेशन ही है गाइस। आई डोंट वांट टू टेक दिस नॉनसेंस वेरी सीरियसली, सो आई एम गोना कीप एवरीवन ऑफ द स्क्रीन। जरा इनकी टर्म्स एंड कंडीशन मैं पहली बार आप ही के साथ पढ़ रहा हूँ, सो यू नो पार्डन मी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट इट। बहुत पहली बड़ा है बात, शायद, बहुत बड़ा है, 3-4 बहुत पेज बड़ा, का दिख रहा है। नहीं अच्छा, नहीं। नहीं ज्यादा बड़ा नहीं है, पर सबसे बड़ी बात तो इसकी फॉर्मेटिंग बड़ी मजेदार है। एनीवेज, access to world record for SSR related subdomains and counterpart sites in other languages internationally, the this code, ये जो भी लिखा है सब इनका देख लो, you know जिस तरह का ये काम करते हैं, is provided by the biggest scam website and the biggest spam portal as usual, and is subject to certain terms and conditions set forth as well as privacy policy and cookie policy. Acha ji. Using and accessing, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to the terms. You are not authorized to use, contribute to the site if you do not accept. So guys, अगर आप कहीं पर मुझे बटन दिखा दें यार, कहाँ क्लिक करूँ आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जहां मैं एक्सेप्ट कर लूँ यार, because if you do not accept these terms, so we update the terms, blah blah blah, and modification will be posted on the site. Should you sign up for a user account on the site and or apply to attempt on world record for SSR record attempt, in addition to the terms, पता नहीं क्या लिखा है, they'll be explained to you prior to your registration. Okay. Cookie policy. If you do not wish to grant consent to the usage of cookies by us, third parties, तो क्या लिखा है? Please see our cookie policy. Okay. If you do not want to grant consent to the usage of cookies by us or third parties in the relation of the, तो क्या करो फिर? भैया इन्होंने कहीं से छाप के डाल दिया है, क्यों अपन पढ़ रहे हो? I swear to God, man. I swear to God. People, that's what I really want to, I want to, you know, tell each of you guys. Really want to tell you all, please, अभी आप जो लोग दे चुके हैं information, अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या करोगे. I have no clue what you're gonna do. इतना कौन पढ़ेगा? सही बात है बॉस, अब मैं तो नहीं पढ़ने वाला, इतना टाइम मैं इन वेस्ट चीजों पे नहीं वेस्ट करना चाहता। ये प्रिवेसी पॉलिसी भी मुझे लगता है सेम कॉपी पेस्ट ही हुआ है, वही सर पेज यू है। रिमेम्बर दैट वेबसाइट ऑफ दैट नसीब, कैसा वो मतलब शोशा वेबसाइट था, कुछ भी फालतू था, या, ये वैसे या, ये इन्होंने ये किया है। इडियट्स वेबसाइट है बिल्कुल ही। एनीवेज, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं एक चीज जो मैं मिस कर गया था। ईमेल एड्रेस भी इनको परमानेंट चाहिए, इनको कोई रिसीट आईडी भी चाहिए जो इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए मांगी है, जो मैंडेटरी है। अब आधे लोग तो ये कहेंगे जी कि यू नो हमने तो सुपर चैट दिया था जी, हमने तो वहां दिया था, तो कहाँ गया? तो उसका रिसीट नंबर कैसे दोगे भाई? मेरे को भी समझाना जरा ये है। ये सब कुछ आप लोग बाय फोर्स, और इमेजिन यस और नो कहाँ है भाई? हैं, ये क्या मजाक बना के रखा है लोगों को? तुम कुछ ऑप्शन हर वेबसाइट पे होता है, इधर यू एक्सेप्टेड और यू डिक्लाइन। ये क्या फोर्स कर रहे हो? इट इज जस्ट यस, यू ओनली कैन एक्सेप्ट इट, नथिंग एल्स। No, the other option you forgot, Varun. It is yes and absolutely yes. Man, this is such a scam, this is such a scam, and I swear to God, लोग, आई डोंट नो मैन। अभी इसके बाद मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ जी गुरप्रीत पाजी, थोड़ा सा ज्ञान बांटो और बताओ। आई एम गोना बी म्यूट, आई रियली वांट टू लिसन इन, व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं बोलना चाहूंगा। बोलो वी बोलो आर सर। लाइक, आई सेड यू कि हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, तो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए क्या बोलता है, क्योंकि ये तो मतलब आधे वक्त तो पिया हुआ रहता है, तो सुनने जाते हैं मतलब बंदा किस किस हद तक गिर सकता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसके लिए जाते हैं कि बंदा मतलब क्या क्या बोल सकता है, क्या क्या पागल चीजें कर सकता है। तो इसके मतलब जो भी लाइव स्ट्रीम होता है ना, उसके ऊपर सिर्फ एक ही चलते रहता है, लड़कियों को छेड़ना, वो जो इसके साथ जो ग्रेस है उन दोनों का फ्लर्टिंग। और कल तो मतलब इसका बायोडेटा किसी ने डाल दिया था, मतलब उस चैनल पे ये डिस्कशन चल रहा था कि मैं तेरे बायोडेटा पे क्या क्या डालूं, तू क्या खाता है, व्हाट आर योर हॉबीज, मतलब पूरा पर्सोनिफाई कर दिया है उसको, पेट्रोनाइज कर रहे हैं बस वो लोग। और उसको समझ रहे हैं नहीं कि सम लाइक ऑफ गॉड, ही थिंक्स हिमसेल्फ ऑफ सम
लैक ऑफ गॉड. एंड बायोडेटा डिस्कशन, मतलब शादी वादी कैसे करनी है, कैसे कराना है, एंड वो बोलते रहता है कि डोंट बी जेलस, दिस गर्ल लाइक्स मी एंड मतलब ये फालतू चीजें चल रही है. दे आर नोवेयर कंसर्न्ड विद एसएसआर और थोड़ा जस्टिस सा, फॉर एसएसआर. हाँ, थोड़ा सा मैं इनको हेल्प कर देता हूँ एक्चुअली. एक बार मैं और स्क्रीन शेयर करता हूँ. इनकी लगता है इनकी क्यूए टीम बड़ी वीक थी. ऑब्वियसली बहुत सारे एरर्स थे, बट भाई लोग अभी भी, अगर, हालांकि मुझे नहीं पता आपकी वेबसाइट ऑन है कि नहीं, प्लीज गो अहेड एंड फिक्स थोड़ी सारी चीजें जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ. बट आप लोगों ने कुछ इंसर्ट के स्पेलिंग देख लो यार, थोड़ा अपना चेक तो कर लेते. बड़ा प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने की कोशिश की है. थोड़ा सा फॉर्मेटिंग और सारी चीजें चेक करने के बाद पब्लिश करते यार. सो ये चीज एक छोटी सी और रह गई थी, तो सॉरी, आई हैड टू ब्रिंग दिस अप. तो हम लोगों ने वरुण प्रॉपर वरुण टेस्टिंग सॉरी, करी आपकी. बिकॉज एक कमेंट आया था कि नवीना जी ने कमेंट किया था कि आई एम इंटरफियरिंग. Sorry, but I will join. Sorry Navina ji and sorry Varun ji that interfering. नहीं 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 नहीं, अरे, नहीं. जस्ट होल्ड ऑफ, ओके. No, no. वो One जो comment बात I'll कर रही make. है कि पहले One थॉट comment, small प्रोसेस. comment I'll make. सॉरी. One small comment I'll make. One small हाँ, comment I'll make. हाँ जी. Actually, they are going to finally add one thing in their privacy policy or terms of conditions. यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है. They are going to add finally that. Yeah. Oh, my common man is here. हाँ जी, गुरप्रीत पाजी, प्लीज गो अहेड. देखिए, मैं एक छोटी चीज़ बोलना चाहता हूँ. आप किसी क्लास 5 के बच्चे को भेज दीजिए मेरे पास, उसको इससे अच्छी साइट बनाना सिखा दूंगा मैं 2 दिन के अंदर. ठीक है? ईज़िली, मतलब मैं किसी बच्चे को लेके बैठूँगा ना, मैं 3 घंटे बाद इससे साइट बना के दे देगा वो. आई एम ओपनली चैलेंज. ठीक है? और जब इनके मैं साइट पे गया तो मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा कौन-सा बेवकूफ़ कंटेंट राइटर है, जिसको ये नहीं पता कि जो उसमें सिंबल्स आते हैं, कॉपीराइट वाले या किसी भी चीज़ वाले, उसको कैसे इंसर्ट करना होता है. अब कोटेशन एट द रेट ऐसा क्या-क्या छापा हुआ है. सब कुछ, हाँ, सब कुछ मत दे देना भाई, सब कुछ मत दे देना. मैं आपको फिर भी बता देता हूँ. बहुत सारी हुँ, ऐसी चीजें हैं, और भी हाँ, सेशन के लिए, और भी हाँ, ज्ञान के लिए, लोगों को समझाने के लिए रखेंगे हम. क्योंकि हुँ, इतना ज्यादा बड़ा ये गंदा स्कैम है, इतना हुँ, गंदा. और ये लोग हुँ, मुझे कह रहे हैं कि वरुण को इतना क्या इससे नफरत या खुंदक है. मैं आपको फिर बता देता हूँ. लोग जो लोग ये थोड़े बहुत गिने चुने जो इसके चमचे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मैं आपको, आई एम नॉट इन अ फाड़ू मोड यार. आई एम सॉरी, अगर मैं लग रहा हूँ aggressive and all that, आई एम नॉट इन अ फाड़ू मोड. आई एम रियली सैड. पता है, कोविड इतनी बड़ी बीमारी है, इतना ज्यादा पेनफुल है, इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं. ये इस तरह के सेशन तो मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहता था. इस तरह के तो यूजलेस टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है. बट वो लोग जो कोविड के उन पेशेंट्स के लिए डोनेशन, जो मैं, जिनके लिए अगर मैं सोच के भी मांगने की कोशिश करूंगा, या मैं कहूंगा भी आप किसी को करो, वो लोग डोनेट कैसे करें जब वो ऑलरेडी इतने बड़े स्कैम में फंस चुके हैं. वो डरते हैं. और ऐसे स्कैमस्टर्स के पीछे बाकी लोग जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं, वो फिर डरेंगे, 100 बार डरेंगे कि हम अपनी डिटेल्स कैसे दें. आज अगर इन लोगों को एक्सपोज हमने नहीं किया, तो कल को हम बाकी लोगों को कैसे, जेन्युइन लोगों को कैसे प्रमोट करेंगे. गाइस, थोड़ा सा, थोड़ी बुद्धि यूज करो, थोड़ा गूगल करो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो. गो डू अ गूगल सर्च ऑन दीज इंडिविजुअल्स. अब सर जस्ट वन थिंग, एक सर जस्ट लास्ट वन चीज थिंग. मैं आपको बोलने से, किसी और को बोलने से बोलूंगा. यस, यस. विच इज, मुझे ये भी कहा जा रहा है, अभी मैं कमेंट्स में भी पढ़ रहा था, कि ग्रेस को तो छोड़ ही दो यार. वो ग्रेस कौन है कौन नहीं है, मैं उसके बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता. आई वांट टू मेंटेन अ लिटिल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द लेडीज ऑन हिज प्लेटफॉर्म, बिकॉज उन लोगों का क्या ब्रेन वॉश हुआ है मुझे नहीं पता. मैंने उनसे कुछ लेना देना भी नहीं. पर इतना मैं सिर्फ समझाना चाहूंगा कि अगर अपना वीजा किसी रीजन से लूज किया है, या आपका जॉब लूज हुई है, use this time to do something better in life. Do something better. अपना जो आपको इतना अच्छा नाम दिया गया है ना, जो पेरेंट्स ने, हिम्मत करके आप उसको यूज करें. गलत शलत नाम यूज करके आप अपने प्लेटफॉर्म पे आप किसी लोगों को बोल रहे हैं ना, आप, अगेन आई एम गोना टेक सर्टेन नेम्स, आप सोनिया रायना को बोल रहे हैं कि वो नाम क्यों लगा के आई. पहले मैं उसको क्लियर एक स्टेटमेंट से कर दूं. सोनिया रायना वो नाम लेने से पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैं ये नाम लेके इसलिए आ रही हूँ क्योंकि देयर इज अ पर्सन हु वाज चीटेड बाय दैट नेम. आई एम गोना कीप दैट नेम. अरे, अपने चैनल पे आप जिनको बिठाते हो अपने साथ, सेक्रेटरी और अपने असिस्टेंट्स और अपने जो भी बना के, जो आपको फोन पे मैसेजेस करके आपको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के नाम पहले अपने आप असली लगाओ. उसके बाद आप किसी और को, जो कि एक जेन्युइन एडवोकेट है, आप पहले अपनी ऑथेंटिसिटी देखो, उसके बाद किसी जेन्युइन बंदे को छेड़ो, आप उनके बारे में बात करो.
आप लॉस जो पढ़ाने आ रहे हो ना, पहले खुद पढ़ के आओ। अपनी जो जो टीचर्स और अपने जो प्रोफेसर्स और उनसे जो आपने अपने जो ऊपर स्टार्स लगवाए हैं ना, आप उनको क्लियर करके आओ पहले। उसके बाद किसी जेन्युइन एडवोकेट या किसी जेन्युइन लॉयर को आप टारगेट करो। तो उन्होंने पहले ही बताया था। एंड यस, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर आप वो उस नाम से, नाम तो कोई भी यूज करके आ सकता है, नाम तो मैं नामों में जाना नहीं चाहता ज्यादा आईडीज में, पर आपके प्लेटफॉर्म पे आपको लगता है कि जो लोग बैठे हैं वो जेन्युइन नाम लेके बैठे हैं, तो डोंट गो इनटू दिस राउट। ओके, सेकंड थिंग, ये जो जो वेबसाइट का जो स्कैम चला है, ये जो डिटेल्स मांगी है लोगों की, आई फील सॉरी फॉर देम। अभी भी मैं ये कहूंगा कि दीज सिंपल पीपल, ऑनेस्ट पीपल, जिन्होंने एक जेन्युइन कॉज के लिए पैसा दिया है, इन लोगों को थोड़ा समझना चाहिए और दे शुड लॉन्च अ ऑफिशियल कंप्लेंट अगेंस्ट दिस साइट, दिस क्लेम, बिकॉज ये पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने का कोई तरीका नहीं है। देयर आर सर्टेन स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस, and no law, no regulation, no governance has happened on this site. So guys, do not even fall prey for that. Lastly, सारी चीजों की सारी का जो एक स्नैपशॉट मैं बताता हूँ आपको। वैसे कहा जाता है, और मैंने ये ट्वीट इनका कॉपी करके रीट्वीट भी किया था, सुशांत सिंह राजपूत इज अलाइव। ये थ्योरी आपने दी है। अगर सुशांत सिंह राजपूत अलाइव है भाई साहब, तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर एसएसआर क्या बना रहे हो? क्या क्या ड्रामा क्या चल रहा है? आपके लिए तो वो अलाइव है, किसी अलाइव के लिए आप क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड? फिर आप सुशांत को क्यों नहीं लाए? आप लास्ट दिन एक सेलिब्रिटी को लाना चाहते थे, वो शायद सुशांत, शायद रिया, कोई ऐसा था, क्यों नहीं लाए? ही इज सेफ एंड सिक्योर। अरे यार, हमें भी खुशी होगी, हमें भी मिला दो, हमें भी दिखा दो कहाँ है सुशांत। क्या मजाक बना के रखा होगा तुमने? है तुमने क्या यहाँ सारे लोगों का, मैं again I might get a little overboard and I want to maintain that decorum, but stop this nonsense is what I can say। पर अगर ये नहीं हटेंगे तो यार ऐसा है, हमने भी ना यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर हम किसी की भी इनजस्टिस तो नहीं सहेंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं उससे कोई जेलस हूँ, जेलस उससे होता है जिसके पास तुम्हारे से बेटर कुछ होता है, जो जो कंपैरिजन में भी नहीं आता, उससे जलन नहीं होती। उस बेवकूफ के ऊपर सिर्फ हंसी आती है और उन स्कैमस्टर्स को सिर्फ हम एक्सपोज करेंगे। हमने अगर इम्तियाज खत्री जैसे को बात करी है, हमने अगर और बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स के बारे में बात करी है। हमारे प्लेटफॉर्म पे जब समीर वांकड़े आए थे, उन्होंने भी 2-3 गैंगस्टर्स के नाम लिए, बड़े चौड़े में नाम लिए उन्होंने। तो हम गैंगस्टर्स, स्कैमस्टर्स, कॉन आर्टिस्ट, हम भी उनके नाम लेके बात करेंगे। जिसने जो करना है, जिसने जो, ये कहते हैं ना, डंके की चोट पे, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि हमें एक्सपोज करने से, हम उनके बारे में शेयर करने से पहले हम नहीं रुकेंगे। सो ऑन दैट आई एम गोना लीव इट टू ऑल ऑफ यू। सो यस गुरप्रीत, पहले तो आप ही चले, थोड़ा आप तो और शेयर करें डिटेल्स। देखिए, पहली बात तो ये है कि फेसबुक की आईडी, यूट्यूब की आईडी और टेक्निकल टर्म्स में डिटेल्स लेने का प्रावधान कहीं नहीं है। अगर आपको इतना वेरिफिकेशन करना है तो भाई साहब आप किसी भी वेबसाइट डेवलपर को, वैसे आप लोग के पास तो हैकर होंगे बहुत तगड़े तगड़े, नासा वासा के, FBI के सीक्रेट एजेंट टाइप के होंगे आपके पास, लेकिन उनको थोड़ा बहुत ना भेज देना मेरे पास सिखाने के लिए। आधे घंटे के अंदर आपको एक मैं प्लगइन दे दूंगा बना के, जिससे कि जब वो रजिस्टर करता है ना, तो मोबाइल नंबर डाल के OTP के थ्रू वेरीफाई हो सकता है, मालूम है? तो आपको वेरिफिकेशन झंझट ही नहीं पालना है आपको। क्या क्यों आप इतना लंबा आइडियाज चौड़ा दे रहे हो फॉर्म? उनको? क्यों आइडिया दे रहे हो उनको? अरे आइडियाज उनको दिया जाता है जो काम कर सके। यहाँ तो औकात बता रहा हूँ उनकी मैं, कि भैया 5 मिनट के अंदर बैठ के डिसीजन तो बनानी ही होंगे कि वेबसाइट बनानी है, अपने को तुरंत करना है। टाइम लिया होगा बनाने के लिए, और हाँ, कंटेंट जो कॉपी करके पेस्ट किए हुए हैं उसका तो राम भरोसा उनका पूरा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली, कोई भी अगर होता है, इवन गवर्नमेंट भी नहीं मांगती यार। फेसबुक क्या कुछ, क्या आपका अगर आप पैन कार्ड भी भरते हो, अगर आप आधार कार्ड के लिए भरते हो, क्या मांगते हैं हमसे? वो फेसबुक की डिटेल दो, यूट्यूब की आईडी दो, इसकी आईडी दो, उसकी आईडी हो, और बाई चांस कुछ मिस मैच हो जाए तो कहाँ वेरीफाई करेंगे उसको वो लोग? कल की डेट में बोल दिया भैया तेरे पापा हूँ मैं, लाइटर नोट पे तेरे पापा हूँ मैं, आईडी कुछ भी डाल दिया, तो डीएनए रिपोर्ट मांगेगा क्या? साबित करो मेरे पापा हो। मतलब हर जगह पर साबित करना है आपको। तो ये बोल देगा हाँ भैया तेरा वो हूँ, भैया डीएनए रिपोर्ट चेक करोगे घर वालों के साथ बैठ के अपना, कि मेरे पास एक आईडी आई है, इंफॉर्मेशन आई है, ही इज यूजिंग दैट, ही इज माय पापा है मेरे वो। तो पापा जी प्लीज मुझे डीएनए रिपोर्ट दीजिए, मैच करवाना चाहता हूँ, एक्चुअली वेरिफिकेशन करवाना है मुझे पूरा, वो कि बोल मतलब सकता है ऐसा जेन्युइन भी? के। अरे यार नैरेटिव
नैरेटिव है यार ये, वो सब वो बोलेगा बोलता मेरा होगा कि क्लोन है, क्लोन। मैं भी क्लोन हूँ, एक माँ से आया हूँ मालूम है। I know. Anyways, so yes, बहुत सारी ऐसे और चीजें निकल के आई हैं और निकलती रहेंगी, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम है ये, इतना बड़े लेवल का वरुण भैया, स्कैम। ये स्कैम तो ठीक है, बट वो लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब कॉन्स्पिरेसीज के नाम पे तुम कुछ भी कर रहे हो। वो लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लेने से आदमी स्टेराइल होता है, मतलब ये अगर तुम फैलाओगे आम पब्लिक में, कोई भी यार, मतलब One अभी second, तो one सबको second, one वैक्सीनेट second, होता है। one हम्म। second. Did they say यस, that? yes, sir. They are saying that, I read somewhere like all his followers, they start playing conspiracy वो लोग adrenochrome type. So they are saying कि वैक्सीन लेने से स्टेराइल होता है। फिर उनके ग्रुप पे कोई और डाल रहा है कि some yesterday some of my known took vaccine and his mother or no, her baby died because once he started breastfeeding. मतलब ये लेवल अगर तुम्हारी है कॉन्स्पिरेसी फैलाने की टू अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ पीपल, मतलब जब भी कुछ हाइप हाइप होता है तो मोर नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्ट देयर। और उसका तो वही है, वो आता भी लाइव उसकी वजह से ही है, क्योंकि वो कुछ बड़ा बोल देगा फालतू कुछ तो वो लोग कुछ भी हद तक जा रहे हैं। और ऐसे टाइम पे जब मतलब लोगों ने वैक्सीन लेनी चाहिए, इट इज मस्ट। Akshay, मस्ट। Akshay, sorry, I'm interjecting. यस Now, सर। the statement that you've made, यस सर। can you please share that particular link or that particular statement? ऑफ That कोर्स is सर। ऑफ legally they will be in trouble for saying that. आई कैन शेयर सर, आई हैव टू गो Perfect. जस्ट इन दैट स्ट्रीम या फिर उनके हाँ, वो कोई ग्रुप नहीं, में जो है। no rush, no rush. यस। My information is very public. Please reach out and share यस। that with me. यस। And यस। actually share it on Twitter. Tag me, tag all the officials and the health officials, everybody. Isko to yaar, this is really crime. This is for me, spreading anything around COVID is a crime of highest degree. So I would really like you to please do that. अरे सर, इन्होंने कल लाइव स्ट्रीम किया है कि एवरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्या होर्ड मेडिसिन। एंड मैं कल दुकान पे गया, क्रोसिन मेरे को 400 रुपए का मिल रहा है, और डिस्प्रिन तो सब खत्म हो गई है, ये वो मतलब वो आदमी किसी भी इशू को सेंसेशनलाइज करके व्यूअर्स और पैसे लताड़ना चाहता है लोगों से। उसका तो लाइव स्ट्रीम है कल का सर। Yeah, और yeah. उसका I तो ये don't. भी लाइव स्ट्रीम है कि कोविड इज अ फ्रॉड, कोविड से तो कोई मर नहीं रहा है, इनको ना ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन्स निकालने हैं बॉडी में से, इसलिए कोविड कोविड चल रहा है सर। लाइव स्ट्रीम है उसके, लाइव मतलब उसके यूट्यूब के चैनल का हेडिंग्स है सर, कोविड ये फ्रॉड है, इज इट कोविड और इज इट समथिंग एल्स, एंड इट इज गवर्नमेंट्स प्लान टू रिमूव नोन पीपल आउट, मतलब लोगों को मारना चाहते हैं एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद। सर लाइव स्ट्रीम है उसके, वीडियोस के टाइटल से सर, मैं मतलब स्क्रीनशॉट क्या, मैं तो सब कुछ भेज सकता हूँ, अच्छे वीडियोस है उसके। Uh, okay. Navina, I'm gonna take a risk, but yeah, it's okay. Since you're saying it's 4:30, please go ahead. Can you hear me, Varun? I'm Navina. Yes. Okay. Oh, Yeah, Lavina. yeah, you Please. remember me, right? I think so. I think so. Yeah, actually, I'm in Ohio, so it's like I wake up at around 6 Oh, a.m. got it. Got it. Now I remember. Okay. Yeah, Please. so I just wanted to ask you, this guy, whoever is doing all this, why is nobody taking an action in India? Um, I cannot comment on that right now on a live, Okay. because of course there are, it's not that nobody is, but in whatever capacity, everybody is taking whatever action they can. But unfortunately, I'll tell you one thing very honestly here: the way our system works is very complex, and that's where I want to just end it. uh, Things can definitely, uh, एक protocol hai, there is some kind of logical actions that need to happen. So it can take a lot of time, जैसे कि विपुल सक्सेना ने भी बोला था, it took him a lot of time, but this वरुण will भैया, But he can totally, you he give to, me your telegram id? I want to share those screenshots to you. I just took a यार मेरे screenshot. मेरे नाम से ही है, वरुण कपूर, या वरुण ओके, कपूर। आप अभी लाइव बता दो, मतलब अभी जो लाइव में आप स्क्रीन ओके। शेयर कर देना। ओ, he अभी to, कर दोगे? अच्छा अच्छा। Varun, he totally changed the story of Vipul Saxena. Like he said something else about what he told on your show was wrong. So देखिए ऐसा है, आई डोंट नो विपुल सक्सेना दैट मच, ओके,
but what I'm gonna say is, uh, एक शायद उन्होंने कोई email share करी थी, on a live stream and all that before, and the entire gang. Now the question I would have is, on that email, where is that particular document where he said, I am not gonna work on it, I'm not gonna do it because of this. उस time पे story कुछ भी बनाए. uh, on the flip side, that particular document, the whole content, was provided by himself, because he was the legal person out of the entire gang. वो जो डॉक्यूमेंट बना है वो सारा का सारा बनाया ही शायद, again, I'll let And Vipul. actually, in that talk, Varun, he kept saying that I never finished my law school. Like, why is that even he claims to be a lawyer then? Ma'am, He- yesterday he himself said that he had dropped out from Yeah, actually, law that is college what he said. yesterday. He was in so much depression and something about his girlfriend, and then he said, "I never did my law school." And then he claims to be a lawyer, talks about law, section codes and all that. So the only thing is, he's going to start one more campaign, and he started advertising about it. So I'm wondering, like, what is he trying to even achieve by doing all this? Like, neither justice, right? I mean, I don't know. नहीं, जस्टिस का तो कोई करेक्शन ही नहीं है. I mean, if somebody is still now thinking के उसने जस्टिस से कुछ लेना देना है, तो you're sadly mistaken. Nothing to do with justice, period. So all I would say is, No, इतना please, बैकअप कहाँ से मिलता है ऐसे लोगों को? दिस बैकअप. बैकअप के लिए, बहुत, again, Sachin, you want to answer that? सचिन जी. Sachin, you're mute. सचिन बहुत अच्छा जवाब देता है इसका. And Sachin, even he tried to talk to Dhruva, and I mean, he was not. I don't know. With Dhruva also, he started telling something. So I was like, what is going on? नहीं, ध्रुवा का भी मैं, आई एम ट्राइंग टू गेट हिम. ध्रुवा अगर अभी ज्वाइन कर सकता है. ध्रुव, इफ यू आर वाचिंग, आई Varun, sorry, I was away. I was हाँ, away for a while. हाँ. I would like to add one thing about आपके लिए whatever क्वेश्चन you're है doing पहले. right now. आपके लिए Yeah, क्वेश्चन yeah, है. please. Yeah, please. क्वेश्चन ये है कि ऐसे लोगों को बैकअप कहाँ से मिलता है? बैकअप, देखिए, जो बहुत सारे सोर्सेस है बैकअप. पहली बात थोड़े जो एसेसरियंस है जो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं. पहली बात, उनको पहले दिमाग लगाना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा उनको बैकअप दे रहे हैं या कुशन दे रहे हैं कि ये ऐसी हरकतें कर रहा है. नहीं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जी. बैकअप एक चीज है, but the influence he has to get out of everything. People report, he gets out of it. Then he tells something, he says he didn't say it. तो कुछ भी बोलना, और just denying the fact that. मैडम, वी कैन स्पेकुलेट ये, बिकॉज क्या होता है कि हम, see, we can speculate and say this guy has backup from many things, but until unless we have complete proof, we cannot take their names directly. Right. At least online we cannot take. Yeah. Then who will take? हम स्पेकुलेट कर सकते हैं. हो सकता है कोई बड़ा लॉयर हो या हमारी ताई हो. Who knows who is behind this guy? बहुत सारे लोग हो सकते हैं. That's true. Yeah. Not Okay. only backup, funding too, just to be clear. Yeah, the Yeah. funding also, right? Yeah. Right. I mean, we can speculate. We can only speculate. Allegedly, you need to put a question mark. ताई है क्या? कोई And बड़ा advocate है क्या? Question mark. actually, this one question that family is not able to even do anything about it. No, Is no. it So let not me answer that. Yeah, that I can answer. That I will definitely answer. Family का जो आप बार-बार हर कोई कहता है, right? See, end of the day, family is already embroiled in a bigger thing, which Correct. is related to the entire case. आप देख ही रहे हैं कि so much happening. I'm sure they have been told by Vikas Singh and other lawyers as well to Yeah. be quiet, to be very, very mindful, and just talk to the lawyer if they have any questions or comments. When it comes to taking action, right? They've taken action against the all the people who are trying to make movies or money through different channels. And now this guy has been defaming. I'm pretty sure uh, that the advocate himself would have him on a watch list, no doubt about it.
because he's maligning not only Sushant but his family, his dad, his entire kind of team as well. But I am sure they will take when the time is right. At this point of time, anything that they do or anything that they give importance to this guy, हम लोगों का क्या है? हम लोगों को तो we are doing it because we really want the motivated warriors to stick along. They're losing focus, they're losing attention, उनको नहीं समझ आ रहा क्या करें. सुशांत अलाइव है तो हमारे सामने भी लाओ यार. हमने ऐसा क्या पाप किया कि हम लोग इतना अपना दिन रात खराब कर रहे हैं. It's 1:30 a.m. here my time and I'm sitting and talking like this. I am wasting my time. People are wasting their own time. अगर सुशांत जिंदा ही है यार तो why not bring him out? भैया वो सिंपैथी भी लेता है, मतलब वो जो 28 दिन जेल गया था ना, तो हाँ. वो तो उसकी गलती की वजह से गया था, बट वो ऐसा दिखाता है कि जैसे पॉलिटिशियंस ये करके जाते हैं ना जेल, ये अरे इतनी वैसे वो सॉरी दिखाता मांगी है. है हर जगह. Please do not call it a jail. It was a rehab. Okay. No, he clearly accepted that he went to a rehab, right? He didn't went to jail. He said he went to rehab also. रिहाब बट वो जो बेल पेपर था, नहीं रिहाब पहले गया था, तो वो बहुत इन एंड आउट होता है रिहाब से, because he has lot of problems. Yeah. Okay. So, And Varun, let me add this thing. ये जो भी कर रहा है ना, इसका कोई एविडेंस नहीं है. And whatever you are doing, this is on in public platform. Be his website, be anything. These are all in public view. And let me tell you, this guy, he has used the F word for SSR. yeah. अब लाइव में इसने SSR को F word यूज किया. And he said SSR is not a big deal. He's not a big man. तो फिर भाई तू जिस भगवान, मैं SSR को भगवान ही बोलता हूँ करंटली, जितने भी यूट्यूबर्स का भगवान है वो करंटली, तो जिस भगवान को लेके तू जितना मलाई कमा रहा है, उसकी पूजा करनी चाहिए या उसको गाली देनी चाहिए तुझे? और तूने अभी तक पब्लिक अपॉलॉजी किया है क्या SSR को गाली देने के लिए? Okay. Have you apologized? All right. I think we should talk more about other things as well. Varun bhai, I have shared you the pics on your Telegram. Telegram पे? Okay. Varun, I want to just quickly mention something before Sure. I do. Hello everyone, Jai Bharat to everyone. First thing, see, I have told you many guys, you can check my past videos. I have been working in cyber security domain, not as a specialist, but as a generalist. The first thing that you see from the website that you were discussing it before, HTTPS जो होता है, उसके पीछे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लगते हैं सिक्योर लेयर के, ठीक है. SSL अभी it is almost obsolete. People still use it, but it's not secure. So if you see HTTPS, the padlock, जो लॉक की साइन आती है ना, ठीक है, तो वो गुरप्रीत, if you are into that field, you would understand me, है ना. तो वो SSL तो अभी चला गया, TLS अभी है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है. तो वो TLS 1.0 वो भी it's not very sort of secure. People can sort of man in middle जो भी होता है उसमें होता है. 1.1 और 1.2 है. तो sorry for giving you this blabber, पर it is not always. किसी को अगर ऐसा दिमाग में हो कि अच्छा मेरे को पैडलॉक आया, पैडलॉक नहीं है तो बिग नो. HTTP तो भूल ही जाओ, ठीक है. पोर्ट 80 को तो भूल ही जाओ, ठीक है ना. तो he has used this website और उसकी जो भी है उसने I think उसने हैश किया है, तो वो I think XHTML यूज किया है या समथिंग यूज किया है उसकी वेबसाइट पे. इट्स अ वेरी सिंपल जावास्क्रिप्ट होगा, पता नहीं उसके अंदर एक्स जावास्क्रिप्ट होगा या तो उसके अंदर स्पेलिंग एरर्स काफी सारी है. तो दीज आर द एरियाज टू फाइंड आउट इफ द वेबसाइट इज सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ स्कैमेबल है वेबसाइट या क्या है. और इंडिया में है, यूएस में है, काफी सारे कंट्रीज में है. हाउ यू कुड रिपोर्ट द वेबसाइट, मैंने यहाँ पे तो कर ही दिया, ठीक है. हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लोकल है, अथॉरिटी है, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, तो मैंने उसके अंदर वो मैंने डाल दिया. तो जितने एंट्रीज ज्यादा होगी, तो मेरे सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जहां जो भी कंट्री में रहते हैं, तो इट्स अ प्योर जस्ट गूगल कर लो कि हाउ टू रिपोर्ट अ स्कैम वेबसाइट. जेन्युइन भी हो सकती है वेबसाइट, पर ये आपका थॉट प्रोसेस है कि इफ यू बिलीव. और ये वेबसाइट मेरे हिसाब से 99% फ्रॉड है, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर मनी $300 + $100 रुपीज अपफ्रंट.
और एंड में कहते हैं कि पे आईडी होना चाहिए, आपने जहां भी जैसे भी आपने ट्रांसफर किया है, दैट मीन्स के यू हैव ऑलरेडी पेड और देन दे विल लुक इनटू इट। तो एज वरुण शोड, तो ये मैंने पहले ही कर दिया था कि सारे उसके स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए मैंने, आई जस्ट गो थ्रू इट एंड आई से ओके यार, मैंने अपना वैसे कुछ नाम डाल दिया था, ठीक है, डमी नंबर। तो उसमें वो वैलिडेशन भी नहीं है कि ये जेन्यून है या नहीं है, डॉट 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 एट डॉट कॉम कर लो तो भी वो एक्सेप्ट कर देगा आपका ईमेल, whereas you have controls, तो वो भी उसने नहीं किया है, वो वेबसाइट के जो भी डेवलपर्स है। Secondly, international book of records, that also seems to be little bit illegitimate to me, because the loading time is around like 20 to 30 seconds, the full page, ठीक है, मेरे हिसाब यहाँ से इंडिया में सर्वर्स होंगे उसके। प्लस मैंने क्विकली उसको स्कैन किया और मैंने देखा कि नीचे देखा कि डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय, नाम ही नहीं है। वो भी मैं बता दूंगा आपको बड़ी जल्दी कौन है ये जो अपने दिल्ली आप में को, है, तो वो सारे कनेक्ट द डॉट्स अभी साला अपने को करना है कि ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दिल्ली में है, वो मेजनीन कोई फ्लोर है, मेजनीन यानी एक छोटा सा वो कस्बा होता है ऊपर 2 फ्लोर का कस्बा होता है ना, उसको मेजनीन ऐसे कहते हैं, कि उस पे जाके ऑफिस होगी, यानी 1 या 2 बंदे होंगे, आई कैन बेट it's not a huge grand office as it one would expect, अगर इतने बड़ी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो तो फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। So these 2 websites, in my personal opinion, is definitely a good qualifier for a fraudulent as well as scamming people. Yeah. And again, people जो भी IT में नहीं है, you don't have to be an IT savvy, but if you are using an internet, you do not blindly trust anything that comes with a padlock. If ब्राउजर्स अभी बहुत सारे हो गए, क्रोम है या जो भी है, मोज़िला आप यूज करते हो तो कोई नहीं यूज करता अभी, पर एज है, आई है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो आपको बोलेंगे कि इट इज नॉट सिक्योर, तो वो तो बंद ही कर दो। पर आप जो भी कोई भी आपको लिंक भेजता है HTTPS करके भी, इफ यू सी राइट क्लिक करके यू कैन सी द व्यू सोर्स, ठीक है। गुरप्रीत, ये एक अलग सेशन करेंगे, what I want to do Vishwat is let me answer these 2 questions, we'll talk about the technicalities, क्योंकि ये जो गुरप्रीत ने भी बोला राइट कि 5 साल के बच्चे को भी भेजोगे ना, 5th ग्रेड के बच्चे को भी भेजोगे, वो भी शायद बेटर बना देगा। तो let's give the ज्ञान right now. I just want to answer these 2 questions, okay? And maybe all of you should chime in here, and I love all of you to chime in. पहली बात तो ये कि आज से ये कॉपीराइट टैग है, ड्रीम्स विक, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। आई थिंक इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज नेम, क्योंकि और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के नाम हैं, ऑलमोस्ट द सेम नेम, आई थिंक आई लाइक द टैग विच इज दिल्ली का ठग। आई थिंक इट्स इजी टू रिमेंबर, DKT, आई थिंक दैट्स गोना बी हिज न्यू नेम एंड दैट्स हाउ वी गोना टॉक अबाउट हिम। सो दिल्ली का ठग के बारे में हम और ज्यादा बात नहीं करना चाहते, बट लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। संजय जी, why you guys are wasting your time and energy on this irrelevant person? The more you talk, you're giving energy to come up with more wild stories. You know who I'm talking. So ये जो दिल्ली के ठग के बारे में संजय जी, हमने पहले भी बात की और मैं अभी फिर बात कर रहा हूँ। The reason is very simple. There are people very gullible, very naive, very simple, very honest people who have worked their life off. Let me just use that word. Or who are working so hard to earn some decent amount of money. They are being fooled to give a part of their money for a cause which does not even exist. They are being, trapped. Their personal information is being pulled into their domain, और उनकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आई डोंट नो आपने कब ज्वाइन किया, नहीं किया तो शुरुआत से आप थोड़ा देखें, आपको मैंने स्क्रीन बाय स्क्रीन दिखाऊंगा, right from their personal ID, Facebook, Twitter, personal email address, phone number, address. अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं, if you're not in India, let me tell you one thing, ये personal information इतनी काफी है to hack into somebody's account or to get personal information about any individual. अगर आप कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं, और किसी से सर्टिफिकेट चाहते हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, सर्टिफिकेट के लिए आपको उसका नाम चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसका सर्टिफिकेट के ऊपर आपको नाम देना है।
आपको अगर वेरीफाई करना है तो वो आप वेरीफाई करेंगे आपके सेशन के अंदर कौन कौन आया था. वो लोग आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड देयर ऑथेंटिकेशन बिकॉज देव ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड व्हेन दे लॉग्ड इनटू योर अकाउंट टू योर स्ट्रीम. क्योंकि YouTube में जब कोई आता है, आप मेरे अगर सेशन में गुरप्रीत अगर आया है, विश्रुत आया है, they clicked on couple of buttons, they clicked on their YouTube या Facebook के आइकॉन को क्लिक करके वो मेरे स्ट्रीम में आए हैं. ये लोग ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड हैं. मैं नहीं आस्क, आई कैन नॉट इवन आस्क देम फॉर दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन. दैट इज अगेंस्ट लॉ. सिंपल एज दैट. तो अगर आपने अपने सेशन पे किसी को बुलाया है, इट वुड हैव बीन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप उनको इंडिविजुअल सर्टिफिकेट देने वाले हो तो उनको इंडिविजुअली आप अपने एक लिस्ट बनाएं, स्प्रेडशीट बनाएं. कोई ढंग से कोई लाइफ में अगर कभी कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया होता तो आप इस तरह करते कि आप उस कॉल के ऊपर रिकॉर्ड करते कि आप अपना नाम दें जो आपको सर्टिफिकेट पे चाहिए, आप बताएं आपने सुपर चैट से पैसा दिए, कहां से दिए. यू कुड हैव डन दैट ऑन दैट सेशन. नाउ आफ्टर द फैक्ट दैट द एंटायर थिंग इज डन, looking for this personal information is a bigger scam. You are gonna hack their account. क्या चल रहा है, क्या किस लिए आपको चाहिए. और on top of that, ये लोग उनकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने के बाद एक रिसीट नंबर या एक वो कंफर्मेशन नंबर, आप ये मुझे बताएं, कोई सुपर चैट से दे रहा है, कोई कहीं से दे रहा है, किसी ने अगर नहीं ट्रैक रखा क्योंकि आपने अपने सेशन पे बोला था कि आई विल कीप अ ट्रैक ऑफ दैट, हम लोग अपने आप देखेंगे कि आपने पैसा दे दिया तो आई विल में. अब आप लोगों से क्यों मांग रहे हैं. वहां उस स्टेप पे आके कितने लोग विल लूज देयर अटेंशन एंड दे विल से यार छोड़, चल दिए गए पैसे, कोई नहीं, हमने क्या बॉदर करना. तो वो पैसे तो आपके चले गए, वो तो इनके अकाउंट में निकल गए. आप बॉदर नहीं करेंगे, अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे कि भाई हाँ मेरे तो दिया था पर अब मैं वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर नहीं कर पाया क्योंकि आपने तो उसको मैंडेटरी फील्ड बनाया और अब मैं रजिस्टर नहीं कर पाया तो मैं सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. और आपने क्लॉज में लिख दिया है कि पैसे तो हम रिफंड करेंगे नहीं. तो अब आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे, तो आपने रिसीट नंबर नहीं रखा, तो वो आपकी प्रॉब्लम. ये जो आप गेम खेल रहे हैं ना पैसा खाने का और हेड़ने का, आई स्वेयर इतना बड़ा स्कैम, इतना गंदा स्कैम. तो इस वजह से दैट इज द रीजन संजय जी कि हम ये कर रहे हैं ताकि आगे अभी अभी ये वाला तो जो स्कैम हो गया ये तो हो गया. अभी तो मुझे नहीं पता कितने लोगों का पैसा गया, कितनों को सर्टिफिकेट मिला, कौन इसको ट्रैक करेगा, कौन इसके बारे में काउंट के बारे में बताएगा. I have no clue. I don't really care right now because people have lost their money. I am worried about people. I don't care वरुण about भैया the future. वरुण भैया वो लाइन में अगले भी है, जैसे केदारनाथ यात्रा या फिर मतलब उन्होंने तो क्या क्या बोला है. उन्होंने तो लाइव में बोला है कि मैं अब इसका धंधा बनाऊंगा, मतलब ये धंधा है मेरा. लाइव में Yeah. बोला है उन्होंने. अरे और भैया नेक्स्ट तुम इज धंधा केदारनाथ बनाओ. यात्रा. मैं आई लाइक टू इंटरफियर. एमजी व्हाट इज या सॉरी. धंधा बनाओ यार. तुम धंधा किससे बना रहे हो? सुशांत से. तो सुशांत क्या हो गया, तुम्हारा भगवान हो गया, राइट? उसी के नाम पे धंधा कर रहे हो ना. तो एटलीस्ट उस भगवान की पूजा करो. उसकी गाली दे रहे हो तुम. जिस भगवान का नाम लेके तुम मलाई कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, उसकी पूजा करो तुम. उसके खिलाफ तुम क्या क्या नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो. ये कैसा ये है यार? आई मीन एटलीस्ट पीपल हैव टू ओपन देयर आईज. और एक थिंग वो नेम के बारे में, मतलब उसका दिल्ली का था. गुड गुड वरुण भैया, क्योंकि वो मतलब उसने तो एक पॉइंट पे ये भी बोल दिया था कि विश्वनाथन आनंद जो जो चेस खेलते हैं ना, चेस अपने इंडिया के ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर, तो ही इज लिंक्ड. उसने तो ये भी बोला है. अच्छा हुआ नाम उसका चेंज कर दिया, नहीं तो लोगों को उस पर भी कंफ्यूजन होता है कि ये भी आनंद है वो भी आनंद है. मतलब वो किसी भी हद तक जा सकता है. विश्वनाथन आनंद ही इज टेकिंग हिम इनटू हिज दिस थिंग टू वेरीफाई हिम. See, my observation till date, and Varun, if you remember, long time back, you were modest enough not to allow me to play the recording of his true self after having, I don't know, Desi Tharra or whatever. You know, he called me up and then, you know, the very elegant language that he used for me, for my mother, for my father. I still have that recording. Yeah. And I deleted from you know, out of because people were abusing that video of that recording from Twitter. But I think this guy is delusional and he forgets things. So अभी he will watch this. उसके जो भी जो चंगू मंगू जो भी है ना,
पता नहीं कोई GYT करके कोई लेडी है, पता नहीं उसका वो है जो भी है, तो वो अभी उसको बोलेगी कि विपुर देखो ये ऐसा बोल रहा था। तो अभी आई बेट कि नेक्स्ट वो तो मेरे को जानता है, मेरे नाम से जानता है, तो अभी नेक्स्ट उसका होगा तो उसमें मेरे भी बोलेगा मैं विश्रुत को भी स्यू कर दूंगा, वो जहां पे भी है मैं उसका तोड़ दूंगा, मेरा जितना हुआ डंके की चोट पे करे। मैं तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। एंड thirdly, about his sort of approach, I see a kind of a trend, like there are 130 crores 35 crores की population है, so he is playing that game कि अगर उसमें से 1 लाख लोग भी, पूरी पॉपुलेशन जो भी मैच्योर पॉपुलेशन है उसमें से 100,000 लोगों ने भी मेरे जो स्कैम में 5-5 रुपए भी दिए, तो उसके लिए तो इट विल बी अराउंड 500,000 रुपीज ईच मंथ, ठीक है। एंड द गाय विपुल सक्सेना, आई सॉ दैट वीडियो वरुण, एंड दिस इज माय पर्सनल व्यू एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज, द वे ही वाज रिस्पोंडिंग। आई हैव माय डाउट्स फॉर दैट पर्सन एज वेल। Okay, उसने क्या किया, I haven't dug deep. I don't have that much time and resources. But जो भी लेडी थी उसने सवाल पूछे कि as a क्या बोलते, moral responsibility you should take. You were involved at one stage. You were party to it. He was taking party as a political party. So, अरे कौन था? अच्छा, Yeah, there was something from that is my personal view. So I do not have I have my own doubts with that person. So I would not trust him personally. उसने जो भी किया, but at the same time support के एक लेडी ने बोला था कि कैसे उसको मिल रहा है। तो usually क्या होता है, जब when I was growing up, back in India, used to see वो चंदे लेने आते थे, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर वरुण, घर पे आते थे, ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए चंदे लेने आते थे, वो सब करने के लिए आते थे, ठीक है। तो जरा लोकल कॉर्पोरेटर जो होता था हमारे वहां पे, वो उसके अंदर उसको फिर इन्वेस्टिगेट किया और वो उसने कहा कि ओके उसको शेयर ज्यादा था, यानी पीपल लाइक 50 to 100 पीपल वुड गो, चिल्ड्रन गो आउट डोर टू डोर एंड दे वुड आस्क फॉर लाइक 1 रुपी 50 पैसा 80 पैसा फॉर अ डोनेशन। एंड वो उसका जो भी पेपर होता था उसके अंदर यू हैव टू साइन इट, दैट्स इट। वहां पे तो टैबलेट था नहीं। दैट गाय एट दैट टाइम, आई रिमेम्बर, आई एम टॉकिंग अबाउट 1991, ठीक है। उस पे वो पकड़ा गया और वो टाइम पे उसने ही मेड अराउंड 8 लाख रुपीस वो टाइम पे, सिर्फ मेरे एरिया में से, विच वॉज लाइक 5 किलोमीटर्स रेडियस, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 8 lakhs he made. And for the kids it was more of a school. वो स्कूल में जाता था, कहता है कि हम यहाँ से आए, ये हमारी संस्था है, आपके बच्चे को करो तो इट विल बी ए गुड एक्टिविटी। तो बच्चे तो नॉर्मली जाते थे और सब लोग दे देते, राइट, बच्चे को देख देख के। So that has happened, and that is the same tactic he is applying on this time in this era, ये अपने YouTube से। और कितने सारे यार, मैं तो उन पे दया खाता हूँ कि लाइक if you become scammed, I should be sorry to say, but you deserve to be scammed, despite of channels like Varun Kapur's, every other Ujjwal Trivedi's, they are saying that beware of scams, man. Come on, this is what happening. If you are still falling for it, God help them, man. So that's all I wanted to say. I will sign out. Okay, thank you. Yes, please Gurpreet. Yeah, I'll take Meherban next. Please go ahead. ठीक है, मुझे सिर्फ 2 बातें बोलनी है। मैं थोड़े दिन पहले उसके चैनल पे गया था, लाइव स्ट्रीम पे। वहाँ पे मुझे बैक स्टेज पे और फ्रंट पे भी बोला जा रहा था कि मेरी अपब्रिंगिंग क्या है, जबकि उनको ये समझ में नहीं आया कि जहाँ एक लेडीज बात कर रही है, मैं चुप हो गया था वहाँ पे। मैं ना हल्ला किया ना कुछ बोला, चुपचाप सुन के वापस आया हूँ मैं। बैक स्टेज में जो भी बकवास की गई है मेरे साथ में, बिकॉज ऑफ लेडीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे कोई भी हो, कहीं की भी हो, हर लेडीज को बराबर को रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए मैं चुपचाप शांत होकर वापस आ गया वहां से, मैं कुछ बात नहीं किया हूँ। अब रही बात अपब्रिंगिंग की, तो यहाँ बता रहा हूँ, कुछ साल पहले यहाँ पे क्या हुआ, एक बंदा आया था नेता टाइप का, छोटा सा। तो वो क्या, घर घर जाके मुझे लोगों की हेल्प करनी है, पैसा मांगा। और उसके बाद थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ, उसने पैसे की होर्डिंग लगा दी दैट ही हैड हेल्प समवन। बहुत सारे लोगों का मदद किया हुआ है।
और आज भी इस शहर में इस बात का चर्चे होते हैं कि गुरप्रीत ने जाके उस बंदे की बैंड बजाई थी। यहाँ के लोकल लोग हैं ना, कोई पूछ लेना। तो ये सीधा सीधा मैं एक कनेक्ट द डॉट्स, अब कनेक्ट द डॉट कर लो कि जब मैं आज से 8 साल पहले ऐसा था तो अभी कैसा होऊंगा मैं। Yep. So Fraud- Gurpreet, I have seen that video. They obviously totally जैसे मेरा भी हुआ था, एक कोई ऑस्ट्रेलियन चैनल पे भी हुआ था, मैं तो अकेला ही था एंड आई फॉट रियली वेल। ठीक है, पर ये बंदा जो है अपना डीकेटी, ठीक है, उसको अभी गद्दाफी का थोड़ा बहुत हो रहा है कि उसके साथ आप उसके गद्दाफी जो अभी मर गया, राइट, इफ यू नो, उसकी औरतों की आर्मी थी। नो हार्म इन दैट, ठीक है, पर हम हिंदुस्तानी है, हम भारतीय है, ठीक है, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर वो बंदा नहीं बोलेगा तो उसके साथ वो ये एक लेडी जो भी मैंने बोला जीवाईटी वगैरह करके कोई है, फिर कोई करुणा वगैरह भी है, वरुण, आई थिंक यू नो। जीवाईटी ने तो कभी फेस भी नहीं दिखाया, तो हाउ कैन वी बिलीव दैट शी इज अ लेडी? शी माइट बी अ मेल आल्सो। आवाज से, अनलेस के कोई प्रिटेंड कर रहा है ना, तो प्रिटेंड ही कर रहा होगा। हाँ, तो वही था, जो भी लड़का, वो लड़की थी, वो आवाज से तो यू नो वी आर मैच्योर इनफ टू आइडेंटिफाई कौन थी, लड़का है लड़की है। तो वो सारे लोग टूट पड़े थे, ठीक है, ये गुरप्रीत पे, फिर ये अपना ध्रुवा था, उसको भी टूट पड़े थे। हाँ नहीं, तो इनके छोड़ो, इनके बारे में यार, आई थिंक वी शुड जस्ट फोकस ऑन, आई अंडरस्टैंड वेयर वी आर हेडिंग, but let me just quickly on the screen I've shown Varun, on a somebody lighter note, just sent me this Varun, on a screenshot. lighter note, Varun, हाँ, one second, on a lighter note, इसने एक धोबी को FBI का एजेंट बना दिया। एक धोबी जो अपने वेबसाइट से कपड़े वगैरह बेचता है, हाँ, इसको इसने FBI का एजेंट बना दिया और तुमको बोल दिया कि भाई तुम्हारे घर के बाहर FBI खड़ी है अरेस्ट करने के लिए। right. वो तो अभी तो बड़ा कुछ अभी तो बोलेगा ही है। वो भी डर के वापस आया ही नहीं उसके बाद से। हाँ, तो अभी आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस एज वेल। अभी मेरे को किसी ने ये स्क्रीनशॉट भेजा है जस्ट नाउ एंड आई रियली वांटेड टू जस्ट प्ले इट। सो इनके चैट में लोग हैव बीन डेस्परेटली लुकिंग फॉर हेल्प। ये देख लो प्लीज, समवन रिप्लाई, और लिख रहे हैं कि ग्रेस टेक टीम, आई जस्ट पुट माय यूट्यूब आईडी नॉट द यूआरएल एंड मेड द पेमेंट, इज दैट व्हाई यू डिडंट रिसीव द रिसीप्ट, हैज माय पेमेंट बीन। लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका हुआ कि ठग नहीं। लिया उनको। यही बोल रहा हूँ, दिस इज द प्रॉब्लम आई एम टेलिंग यू गाइस, मेनी पीपल विल लूज। यू नो, वो एक होता है कि यार चल मैंने $8 दिए थे, चल मैंने 10 दिए थे, कोई नहीं, दान की तरह लेके चलता हूँ। तो इसके लिए तो वो पैसे मिल गए, ना सर्टिफिकेट चाहिए उसको, ना उसको मेल करेंगे, ना कुछ, और यू नो स्कैम की तरह अपने पैसे हड़प के खत्म, गेम ओवर। कहते ना, ओके टाटा बाय बाय, हो गया, पैसों का हजम खत्म। तो और उस दिन तो बोल रहा था कि इनफैक्ट इसके बहुत लिए जगह मीम लॉकडाउन है, है आपके तो साथ प्रैंक सर्टिफिकेट हुआ भी है, आपके भेजता नहीं साथ आएगा। प्रैंक हुआ है बोल के। So there will be no certificate in my view, and that is the reason उसकी जो भी थी ना, ये ग्रेस जो भी है, वो कह रही थी people joined out of क्या कहते हैं उसे, humanity, और out of love for SSR, they are not after certificates। वो पहले से ही वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो बना रही है, यू नो, गुजराती में कहावत है पाड़ बांधने का, यू नो, तो गुजराती यहाँ पे तो, बट यू नो शी इज ट्राइंग टू बिल्ड अ वॉल बिफोर समथिंग हिट्स हर बैक, कि सबको वो मेंटली वो माइंड गेम्स खेल रही थी, वो ध्रुवा के साथ भी, इफ ही कैन कम दैट वुड बी नाइस, इफ ध्रुवा कैन जॉइन दिस, that the mind game, like you are so nice, thought you were so intellectual, you know, but you are following this US guy, blah blah blah, you know, and so on. So the mind She games doesn't let viewer speak because she knows that ये अगर बोलेगा तो सब बाहर आ जाएगा। वही बीच बीच में बोलती है। yes, all right, okay, yes. enough guys, so let me just do it this way. बहुत देर से अनुभव is waiting. Anubhav, please go ahead. Anubhav, you're mute. Okay, Anubhav, I don't know, maybe you went हाय some. सॉरी Yeah. या हाय एक्चुअली मतलब ये लोग तो आप काफी बात कर रहे हैं इस बारे में, मैं एक्चुअली मुंबई के उस पे बात करने आया था। Sure, बट या बिल्कुल। आई मीन लाइक सम ऑफ द पॉइंट्स लाइक यू गाइस आर शेयरिंग राइट, एक तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसी तरह मैंने एक और स्कैम देखा था विच वाज समथिंग अबाउट लाइक आजकल जो है ना काफी प्रोडक्ट्स जो लोग बेचते हैं ना, सो व्हाट इज हैपनिंग इज लाइक मैंने फेसबुक पे ऐसे एक लिंक देखा, उसमें था कि लाइक जो आजकल वो रोटी मैटिक चल रहा है राइट,
$999 का and all that, right? So he was selling some similar equipment. वो exactly Rotimatic को उसने copy मार दिया and उस बंदे को वो $27 में बेच रहा था. Wow. $27 from $999 और exactly Rotimatic को उसने copy मारा. ठीक है. अच्छा. एंड उसने पेपैल का मतलब उसने तो बहुत जेन्युइन साइट बनाई थी. लाइक यू गाइस कैन फिगर आउट द लूप होल्स इन दिस पर्टिकुलर साइट. उसने तो बहुत जेन्युइन साइट बनाई थी एंड यू कैन इजीली बी लाइक फिश बाय दैट, राइट? तो उसमें था कि यू कैन इवन पे थ्रू पेपैल, यू कैन पे थ्रू एनी लाइक क्रेडिट कार्ड एंड ऑल दोज, लाइक प्रॉपर उसने पेमेंट ऑप्शन बनाया था. ही लुक लाइक अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ वेबसाइट डिजाइनर. तो इस टाइप के भी काफी स्कैम्स चल रहे हैं. यू गाइस शुड बी रियली अवेयर ऑफ इट. लाइक यू कैन नेवर इमेजिन अ प्रोडक्ट विच इज $999 और वो सडनली आपको दूसरी साइट पे, और एंड ही डिड नॉट क्लेम दैट इट वाज रोटीमैटिक, इट वाज सम अदर नेम. इस टाइप के लाइक काफी वो स्कैम्स वगैरह चल रहे थे. एनीवेज, तो मतलब मेरा पॉइंट ये था कि मतलब हम लोग महाराष्ट्र के उस पर बात कर रहे थे. तो देयर वाज सम ऑफ द लाइक पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में इतने हॉस्पिटल्स में ब्लास्ट हुए हैं. लाइक कभी ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट, कभी कुछ ब्लास्ट, लाइक एटलीस्ट 5 तो मेरी नजर में है. एंड जबकि महाराष्ट्र में न्यूज को काफी ज्यादा दबाया जाता है. आई डोंट नो वेदर यू गाइज नो अबाउट एक जो शिवसेना के कॉर्पोरेटर ने, ही वेंट टू सम हॉस्पिटल एंड ही डिड सम बवाल, and because of that most of the doctors in Bombay, they are on protest, right? Yes, a lady corporator. हाँ, कोई lady corporator, right? So what happened, there was one great journalist, RD, oh sorry, RS, do you guys know कौन है? Yeah, India Today. Right? So like he tried to tweet on that. He tried to tweet on that और विद इन 5 minutes उसको पता नहीं क्या धमकी आई एंड ही रिमूव दैट ट्वीट. he was just trying to show his genuine thing कि ये क्या चल रहा है वहां पे and all that, right? And within 5 minutes he deleted that tweet and some people got that screenshot and they were like what the hell is that. इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है. अगर कुत्ता अपने मालिक पे भौंकेगा तो मालिक को तो ये होगा ना. Exactly, that's the thing, राइट? तो और मतलब ये महाराष्ट्र में मतलब इतना ज्यादा मतलब वो ब्लास्ट हो रहे हैं. मतलब आई एम लिटरली सरप्राइज कि व्हाई नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट देम. लाइक कैन आई शेयर माय स्क्रीन? लाइक मैं तो 4-5 निकाला था. तो ओ सॉरी, just be mindful of what you share. yeah, sure. Yeah. So yeah, this is number 1. ठीक है, ये हुआ है. You're not sharing. Oh, I'm not. Let me. I don't know. Yeah, while you're doing it, Akshay, I haven't received it. I don't know. मेरा ID है वरुण कपूर, एंड में Z या Z है, तो प्लीज उस पे भेजो. I don't know आपने किसको भेजा है. KAPUR Z. Okay. Can you see my screen now? Yeah. This is 1. Yeah. Right. ये हुआ है 24th April, ये लेटेस्ट है इनफैक्ट. ठीक है, उससे 2 दिन पहले यहाँ पे हुआ था नासिक में. Then another one that happened on 26 July, जहाँ पे 9 लोग मरे. Another one, ये शायद जनवरी में हुआ था, एक्सप्लोजन जहाँ पे 10 मर गए. एक और हुआ है सोलापुर में. Like what is going on? मतलब like इंडिया में किसी और स्टेट में इतने वो नहीं हुए, and like just one state, like every month there is some incident like this happening. Is this the state of affairs? Like मतलब There कुछ should be a action नहीं ले serious रहे. investigation on this. ये तो कुछ बहुत बड़ा झोल लग रहा है भाई. ये तो बहुत बड़ा झोल लग रहा है. Yeah. I mean इस टाइप के मतलब और भी बहुत सारे हैं, मैं इतना शेयर नहीं करूंगा, बट इस टाइप के बहुत सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकता है. Sorry, I didn't hear you. And do you know उनका हेल्थ मिनिस्टर क्या बोल रहा है आके प्रेस में, क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि भैया ये जो ब्लास्ट हो रहा है ना, ये दिस इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया बोल रहा है. इट्स नॉट अ इंडियन न्यूज बोल रहा है वो. इट इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया बोल रहा है. कैन यू इमेजिन? वाओ. इट्स नॉट इंडियाज प्रॉब्लम बोल रहा है वो.
मतलब क्या महाराष्ट्र कहाँ है, इंडिया में नहीं है क्या? Okay, that's a good topic as well. Akshay, sorry, Anubhav. Oh, did Okay. we lose? Did we lose? और Oh, नहीं है. हाँ. एक चीज और है, मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू महाराष्ट्र, बट देन मैं एक्चुअली एक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का वो देख रहा था, तो प्रॉब्ली आई शेयर विद यू गाइस, अभी शायद लिंक में आ नहीं रहा है, तो ही वाज शेयरिंग द ग्राफ ऑफ हाउ द कोविड ग्राफ इज गोइंग ऑन, राइट? तो मतलब जैसे महाराष्ट्र में इट हैज स्टार्टेड शोइंग अ प्लेटो और थोड़ा डिप हो रहा है, तो इंडिया में कई स्टेट्स में मतलब अक्रॉस द कंट्री इट्स अ गुड साइन कि यू नो द प्लेटो हैज रीच्ड एंड धीरे धीरे वो डिप होने लगा है, तो मे बी यू नो बाय 15-20th इट माइट बी इन अ बेटर शेप। प्रॉब्लम इज इन उत्तर प्रदेश और दिल्ली और केरला, वहां पे 3 जगह जो है थिंग्स माइट गेट वेरी बैड। उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम ये हुआ बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, कोई मोदी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बाहर ये है ना कि मोदी की रैलीज में जो है आपका वो होता है, कोविड फैलता है एंड ऑल दैट, कोई मोदी नहीं गया, कोई कुछ नहीं है, बट पंचायत इलेक्शंस हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोविड इज नाउ राइजिंग इन द विलेजेस, which is a very big problem. Because the villages में health infrastructure is almost crippled, right? कभी बना ही नहीं, इनफैक्ट cripple क्या मतलब, वो तो कभी था ही नहीं वहां पे, right? तो आई थिंक उत्तर प्रदेश में there might be a big problem, but I think बाकी सब जगह there is some good news. So IIT कानपुर का प्रोफेसर है, I'll share in this thing. Probably everyone should watch that. You guys will get some good information there. I And mean, can एक you और believe Maharashtra accounts for more than 50% of COVID cases and more than 60% of deaths? नहीं, अब तो ऑल ओवर इंडिया फैल गया ना, तो अब लाइक यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम महाराष्ट्र, लाइक आइडियली I सब mean, come लोगों on, को yaar. Maharashtra population is 12 crores. Uttar Pradesh population is 24 crores. And Maharashtra is number one. In fact, it is more than 50%. या I mean, what the best CM has done, best CM, काहे का best CM है ये? मैं तो बोलता हूँ, the only solution to this corona is that person should be removed. या दैट्स ट्रू, आई मीन लाइक आइडियली, लेकिन अब वो मीडिया बोल नहीं सकता ना, बिकॉज अब तो ऑल ओवर इंडिया हो गया, लाइक दैट इज समथिंग यू कैन नॉट प्रूव नाउ, राइट? तो मतलब आई एग्री विद यू, बट देन दैट्स द पॉइंट, लाइक हाउ डू यू प्रूव इट नाउ, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया फैल गया, किसी और स्टेट ने नहीं किया। इट्स द सेम थिंग, लाइक कहाँ से कोविड स्टार्ट हुआ 2020 में, 2019 में, बट नाउ देयर इज नो वे टू प्रूव इट, राइट? सब लोग कोशिश कर रहे हैं, बट देयर इज नो वे टू प्रूव इट, अरे लोग राइट? इसको तो बहुत anyways, बहुत that's सारे the लोग difference. यूज करना Yeah. चाहते थे, you wanted to call Varun, it I would like to China share one information. Varun, I would like to share one information. बोलो सर। दिल्ली और महाराष्ट्र को एक एडवाइस दिया गया कि they have to set up 10 oxygen cylinder plants by a certain period of March or April Right. in order to counter this COVID wave. You know how many have been introduced or how many have been set up? Only one. Yeah, only one for both. I know. I saw that. Okay. Yeah. Great. Thank you, Anubhav, for this info. All right, And, thank you. we'll All right, guys. definitely Bye-bye. talk more about it. Good night. Thank you so much. Bye. Good night. All right, Mehban ji, welcome. And what Hello, Varun ji, कैसे हो? ठीक हो? Yes, sir. What's sir going on? I hope everyone's safe and healthy in this Yes. COVID crisis. So far. क्योंकि हालत बहुत खराब है। मैंने बहुत। कल फोन किया इंडिया, मेरे भाई घर पे सबको कोविड हो रखा है, वो होम क्वारंटीन पे है। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू बी सेफ होम, क्योंकि हालत अभी ये पीक नहीं है, पीक आने वाला है। Yeah. पीक इज कमिंग। तो Yeah. जो भी घर पे आइसोलेट कर, अगर कोविड नहीं, सिर्फ माइल्ड सिम्पटम्स भी है ना, डोंट रश टू हॉस्पिटल्स। होम क्वारंटीन इज अ मस्ट। होम क्वारंटीन इज मस्ट। और पैनिक सिचुएशन मत करो, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। अभी ऑनेस्ट पीपल बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है। कहीं पे कहते हैं कुछ है, कहीं पे कहते हैं कोई रोक रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। I'm not gonna blame anyone here. It's a crisis, but for God's sake, don't pass misinformation. You're creating more havoc and more chaos to life. I know, and that's very important as well, because last kuch dinon mein, I'll be very honest, I've been
मैं ना Yeah. स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बोल रहा हूँ ना गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ. Correct. इट्स अ हेल्थ क्राइसिस. मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, I'll be very honest, इस time पे I know there are the sentiments are running very, very high on a lot of people, but right now we as responsible citizens should not talk about politics at all. मैं तो हालांकि people on this platform also want to talk about it. I don't kind of मैं disagree नहीं करना चाहता उनके साथ, किसी के साथ भी, पर इस time पे I think the most important thing right now is to get the help out. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये कौन सी पार्टी है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, रियली डजंट रियली मैटर राइट नाउ. इस टाइम पे लोग जो बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ, this story that I heard, this guy sitting in the car with an oxygen cylinder waiting for a ventilator bed, he couldn't make it. He just vanished in thin air just because he couldn't get it on time. हम लोग इसके लिए करें. I was really pissed off yesterday. मैंने विराट कोहली कह रहा हूँ, क्या नाम है उसका, सहवाग का पोस्ट देख रहा हूँ. ही सेलिब्रेटिंग कि जडेजा तूने क्या खेला, तू ही बना सकता है 6 बॉलों में 37 रन्स एंड ऑल दैट नॉनसेंस. जस्ट शट अप गाइस, आई स्वेयर टू गॉड. इस टाइम पे आप किसी और चीज के बारे में, ऐसी चीज के बारे में, क्रिकेट फॉर ऑल, आईपीएल को तो हम बाद में कभी एक्सपोज करेंगे. ऑब्वियसली we've done it once, we will do it more, but at this point of time the most important thing for you, especially for people like Virender Sehwag, is he owns so many schools, he runs these schools बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों की make them, convert them into ventilator hospitals or areas where you have these beds. Help people, get them to the necessary things. You have minted so much money, now it's the time to do some goodness. छोड़ दो थोड़ी देर के लिए आईपीएल को, छोड़ दो बाकी चीजों को. उधर से मैं वो देख रहा हूँ, the भाई of this, जिसको obviously the shameless fellow he is, very shameless. इसको अपने ट्रेलर के ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है, खुद ही अपने ट्रेलर रिलीज करके खुद ही उसके बारे में वो कर रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू. अरे stop doing all that, focus on people. ज्यादा इतने जो करोड़ों कमाए हैं, अरबों कमाए हैं, वरुण, लेट मी टेल यू, उस ट्रेलर, उस पिक्चर का एक भी चीज ओरिजिनल नहीं है. गाने भी कॉपीड है, गाने भी रीमेक है. मैंने तो सुना नहीं भाई, मेरे को तो पता ही नहीं क्या है उसमें. Anyways, so again, I'll go back to the same topic. Yes, Ujjwal ji, I think you want to say something to this topic. जय हिंद वरुण और सभी दोस्तों को. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव. हम सबकी जय हो. और ये कोरोना का एपिडेमिक है, इसके ऊपर हम सभी विजय पाएं कलेक्टिवली एज अ नेशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड पॉलिटिक्स. या वरुण जी, जो आप बातें कर रहे थे, उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू शेयर सम इंफॉर्मेशन एंड सम थिंग्स विद यू. See, in the first thing is we should not panic at all, because ये panic है ना, this panic sets off a reaction, gives you shortness of breath, है ना. और जिसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत सिम्टम्स हैं, थोड़ा नोज ब्लॉकेज है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत जल्दी एग्रेवेट हो जाती है. तो दैट इज समथिंग वी नीड टू रियली गार्ड अगेंस्ट. दूसरा वरुण, जिनको नहीं हुआ है या जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनके लिए there are two homeopathic medication which Homeopath Association of India last year had flashed throughout the country, giving the names of the medication. Normally they do not give out names. One is Ayush 30, Arsenic 30, sorry, Arsenic 30. You can take it in a pill form. You'll get it even abroad. You'll get it in US, UK, anywhere. Yeah, under the German brand you can get it. Reckitt Benckiser or SBL, any of these brands. Yeah, Arsenic 30 is in a pill form. You need to take it four pills 3 times a day for 5 days. After that, you give a gap of 2 days. And then there is another one called Camphora, CAMPHORA, Camphora liquid. That needs to be taken 4 drops or 5 drops twice a day for 2 days. है ना. तो पहले 5 दिन आपने ले लिया, फिर 2 दिन का गैप दिया, फिर 2 दिन कैम्फोरा ले लिया. उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 30-day cycle you do not need to take them. This provides a very good preventive cover. Yeah,
against any kind of COVID infections. कोरोना तो बहुत सारे हैं, these are all flus. तो ये जरूर लें. मैं तो ले रहा हूँ, पिछले 18 मंथ से मैं ले रहा था, तो वो नवंबर में हमने सब स्टॉप कर दिया. तो my youngest daughter got COVID अभी recently. Oh, she's now getting better. They're in Delhi. Yeah. glad. So she's now getting better because we have restarted it again. You Okay. do it. है ना, ये सारे लोग कर सकते हैं. कैम्फोरा लिक्विड को थोड़ा 4-5 टीस्पून ऑफ वाटर में मिक्स कर लें, एक ग्लास टम्बलर में, फिर ले लें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा स्टमक में लगता है. एंड बाकी ये दोनों मेडिकेशन आप जब आप लेते हैं, you can take it before your meals, 1 hour or 45 minutes before your meals. After taking them, do not eat or drink anything for 10 or 15 minutes, and then do your normal routine. ये आप सब लोग immediately कर लें, प्लीज कर लें, this is important. दूसरा, any brand, you will get गिलोय का काढ़ा मिल जाएगा, that काढ़ा mix. You know, अगर डाबर है तो उसमें शायद उन्होंने गिलोय अश्वगंधा मिक्स करके वो रिटेल करते हैं. So any of these two brands you will get it anywhere. अगर ये मिल जाता है तो have it twice a day. Please, please. Those who have, those who do not have, everybody needs to start on this. This will build your immunity. At least this is what we can do. Do some normal breathing exercises, please. है ना? जो कोविड पेशेंट्स हैं, they should not hold their breath at all. जिनको कोल्ड कॉफ है, सांस रोकनी नहीं है, कोई भी प्राणायाम आप करते हो, जस्ट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. बट ये आप जरूर करें, है ना. हमारे यहाँ तो हमने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, पहले से भी करते थे. प्लस you can get hold of a tulsi plant. Everybody can get hold of a tulsi plant near your house or inside your house. 5-6 तुलसी के पत्ते सुबह सुबह थोड़ा वाटर से वॉश करके, थोड़ा गुड़ के साथ में, जैगरी के साथ में, आप उसको चबा लें, खा लें, after you freshen up. Okay. Or you wait another 10 minutes or something, then you drink water, whatever. So वो पहले दिन से आपको ये फर्क मालूम पड़ेगा. These are things that my family and me we have been doing for the last 18 months. बीच में ये एंटी कोविड मेडिकेशन हमने बंद किया था, वो अभी रिस्टार्ट कर दिया है, तो ये आप जरूर करें. The other part is in Delhi, there is a 1,000-bed facility near Dwarka, near domestic terminal 1. उसका नंबर जो मेरे पास आया, जो मैंने फ्लैश किया, वो शायद गलत है. तो if anybody who stays near Dwarka or near the airport, any of our volunteers can go to that facility that has been created free of cost for all patients, all COVID patients. Okay, and it is sponsored by Tata Group, the DRDO, and the army is running it. So that is one facility. The second facility is that ITBP facility at Radha Swami Vyas ground. तो ये दोनों के नंबर्स अगर, हाँ, दोनों के नंबर्स अगर सबको फ्लैश कर दे सारे ग्रुप्स में, इट विल बी इजियर. दूसरा, हमारे एक SSR वॉरियर है, रवि तिवारी, उन्होंने एक एड्रेस नंबर फ्लैश किया है दरियागंज में, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग हो सकती है. इट इज हैपनिंग 24/7 एंड द चार्ज इज ओनली 50 रुपीज पर सिलेंडर. Okay. So people can use these facilities. मैं एक बात बताना चाहता हूँ. इंद्रपुर गुरुद्वारे गाजियाबाद में फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रिफिल हो रहा है. वहाँ भी है. तो जो भी गाजियाबाद में रह रहे हैं, उसके आसपास इलाके में, they can go there. बिल्कुल. So guys, can I suggest, all this information, okay, give me 1 second. 2-3 groups. I'll put it on the Warriors. Yeah. I'll put it on the Warriors, the Telegram group. Huh? Right. You can put it there. Also, we have created a COVID care. एक लिंक हमने क्लिक किया है, बनाया है. Okay. And वहाँ पर we are encouraging people to just post any verified information if you have. I'm gonna post the link here, and I'm gonna post the link also on the Warriors group also. So I really want all of you who have verified information, please go and post it there as well, so that everybody can get it. और मैं उस ग्रुप की डिटेल्स दूंगा ग्रुप में. अरे वरुण, क्या कर रहे हो यार?
दिल्ली का थक तो आपको बोल रहा है कि यू आर एन ISI एजेंट एंड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन लाइक 400 रुपीज पर सिलेंडर रिफिल. आपको मनी लॉन्ड्रिंग और ISI एजेंट बोल रहा है सर. बी केयरफुल. Amit sir, can I speak some more sir? Please sir. Please sir. सर वरुण जी, आप ये ITBP का वो PRO के थ्रू या किसी के थ्रू अपना कोई वॉलंटियर है वहाँ पे, तो उनका वहाँ पे नंबर निकलवाइए, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह. और दूसरा ये टर्मिनल 1 के पास कोई भी अपना वॉलंटियर अगर रहता है पालम एरिया में या द्वारका में, they can actually get us the number of this facility. Okay, I will put all the both these details in your Warriors for SSR and आपका जो लिंक है उस पे. तो प्लीज ये जरा अगर फ्लैश कर देंगे तो for Delhiites it will be a very big help. Only thing is we are missing something like this in Mumbai. Please, please, please. Mumbai, Pune. प्लीज आप शेयर करें जरा ये डिटेल्स. आप जरा अभी मैंने चैट में डाल दिया लिंक. मैं आपको पर्सनल भी अभी पिन कर दूंगा. तो आप प्लीज go ahead and share it for sure. दूसरा sir, there are two people who have formed their own groups of volunteers and they're doing a admirable job for getting hospital admissions, oxygen and all that. And these are not, they're not doing from the party angle or something. One is Tajinder Singh Bagga in West Delhi. West Delhi, that is Uttam Nagar, Tilak Nagar, Shiv Nagar, Hari Nagar, Janakpuri. है ना? The other person is Kapil Mishra. These guys are actually indeed have been found to be very helpful on the ground. Yeah, so they are doing it on their own. तो इनकी भी हेल्प ले सकते हैं. They are easily available on Twitter. Okay, got it. So this is all useful information. बहुत सारी डिटेल्स मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा. उज्जवल जी ने अभी इस स्ट्रीम पे बोला है, प्लीज इसको शेयर जरूर कर देना. और स्पेसिफिकली इफ यू कैन कट दिस, एंड आई विल ट्राई टू कट दिस snippet which Ujjwal ji just mentioned, so that we can spread these details, specific details. Or I would encourage Ujjwal ji also to post it in different groups as well for us. And if you once it is there, I will take a screenshot and put it on Twitter as well. Please, this is all very useful and helpful information. You know, please spread it. Please spread it. All I can say. Yes, sir. And only thing, Varun ji, ये please अपने volunteers का help लेके ये दोनों facility का एक 500 बेड फैसिलिटी है अभी आज जो ओपन हुई है, उसको ITBP का DG का ऑफिस या PRO ऑफिस से उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल सकता है. सेकेंड इज ये जो टर्मिनल 1 के पास में जो आर्मी, DRDO और टाटा का जो फैसिलिटी है उसका एक्चुअल नंबर्स निकालें. बिकॉज एक नंबर जो मैंने फ्लैश किया है जो मेरे पास है, मैंने भी ट्राई किया था, इट इज नॉट, वी आर नॉट गेटिंग थ्रू, है ना. तो उसका एक्चुअल नंबर निकाल लें. जो भी वॉलंटियर है पास का इज ऑलरेडी फंक्शनिंग, so it will be a great help to people, right sir? Okay, this is on COVID, sir. Sure. The other one which I wanted to share, I've also shared two videos. One is on COVID diet, second is on exercises for COVID patient by Dr. Hansa Yogendra. She's a very renowned yoga acharya. Yeah, she is heading the Yoga Institute in Mumbai. It's a 125-year-old yoga institution. It's that pure Patanjali yoga, है ना. उसमें कोई addition, dilution, modification नहीं है. And उनके videos को मैंने I think आपके ग्रुप में पोस्ट भी किया है, वापस कर दूंगा. Okay. वो अगर सब लोग देख लें, whatever you can do, please do, because you increasing your lung capacity is very, very important, friends. This attacks your lungs and it attacks your gut. Two things very badly, this virus. Varun, I've just sent you, sorry, Ujjwal, I've just sent you a number on your Twitter account. In the message. That's a verified number of Khalsa Aid, providing free oxygen for homes anywhere you want, based in Delhi. You can get them in contact. You can get them in contact. They will ask you to fill a form in, including your name, patient, and your Aadhaar card. That's it. That's the only need. That's it. And then once Mehbanji, excellent. Please, I have been trying to reach these Guru Singh Sabha guys. I mean, I had a lot of friends in Mumbai, but somehow I am not able to get through. If you can get through from your side, please, if you can, for Mumbai, we'll be grateful. Because Mumbai में अभी कुछ नहीं है. I will try my best. I'm trying. मैं contract कर रहा हूँ कोई
कोई अगर होम में इधर लंदन में कांटेक्ट करो, कोई अगर मुंबई में होगा तो मैं डायरेक्ट आपको लिंक कर दूंगा, ट्विटर पे वरुण को टैग कर दूंगा, आप देख लेना। ट्विटर पे वरुण को टैग कर दूंगा। बट जो खालसा एड है मैं खुद काम करता हूँ उनके साथ, इसलिए मेरे पास वेरीफाइड नंबर है उसके। तो दे प्रोवाइडिंग फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स। अगर खुदा ना खास्ता किसी की मृत्यु भी हो गई है, अगर लकड़ों का इंतजाम नहीं हो रहा ना, वो भी प्रोवाइड करते हैं। उनको आपको नंबर अपना दे दो, जहाँ आपको हो गए आपको ऑक्सीजन पहुंचा देंगे आपके लिए। Okay, great. Please pass on that information. Yeah. Acha, Varun, on this our topic which you started with, this scamming of people which is happening, boss, I just it struck me as a thought. I may be right, I may be wrong. We can discuss it. It is already whatever scams which has already happened. Lot many people have been trapped into giving money. Some blackmails have happened, some extortion has happened. IABM का भी जो issue है, then AWS का भी past है. So all this should actually make it easier to trigger an ED or an NIA investigation, because one of the actors, present or past, is right now in Bangladesh. Isn't it? Yep. So it shouldn't be too difficult to trigger an investigation. Right. That is one. Right. Secondly, the gentleman, the Colonel Anup Saxena or Vishnu Saxena, who came on that IIBM discussion. Yeah, Mr. Saxena. Yeah. Mr. Saxena. Yeah. If he could just share his, he has lodged an FIR already. Okay. So Right. that FIR details and all that, na, then you can combine it and actually fresh 2-3 अगर कोई complaint करता है, even to Delhi cyber cell, it can start off a big one, a big thing. Yeah. We will. We'll Just share. Varun, one question. Yeah. Varun, one question. This guy has abused, Delhi ka thug has abused or Modi ji. He called Modi ji as mass murderer. Yeah. So can any action be taken against him? Yeah. I think वो तो वैसे भी बहुत पुराना ट्वीट है उसके बारे में जो आप बात कर रहे हैं, पर उससे ज्यादा No, Varun, he has done it recently also. He has done recently also. उसने क्या बोला मालूम है? I have called Modi mass murderer, but I have nothing has happened to me. See, मैं कितना ग्रेट हूँ बोल के खुद की तारीफ कर रहा है. सर इसके ऊपर सेक्शन आई थिंक ध्रुवा साहब को मालूम होगा, वो छोटे मोटे लगते हैं, लेकिन ईडी वाले सेक्शंस अगर लग गए ना तो यू कैन नॉट गो एनीवेयर, और वो ऐसा बुच है ना, उससे यू कैन नॉट गेट ऑफ. इट्स अ डेडली वन, है ना. और दूसरा है वो एनआईए वाला. ये दोनों ऐसे वो है ना हथियार है, तो किसके पीछे पड़ गया तो बॉस वो बाहर वो पानी भी नहीं मांगेगा. Varun, I'm just about to leave. Right, sir. I'll just a suggestion. Sure. Once again, Vishnu. Sure. Jaldi, I think you want to leave, so thank you so much. Yeah, I want to leave. All this information. Yeah. Thank you. जय हिंद, जय भारत सबको. जय हिंद. सबकी जय हो, सबकी जय हो. भारत माता की जय. Yes. Please go ahead. Yes, Vishnu. So you know how there is a petition.org thing, you know. Mm-hmm. How about, because you are now a public figure, I don't know about others, but you are a public figure. If anyone knows more than like 5 people, other than your family members or your friends and family, I personally, tag it as a public figure because they are public, right? Okay, so take it that way. Okay, sure. Of course, you are more than that. If you start a petition to sort of investigate this DKT, and all of us, the genuine one, I'll be the first one, to support that. And at least we need to know, there are so many video evidences, and I've got recordings, enough recordings, even, if there is a law that exists in India, abusing over the phone and threatening someone over the phone, that is one thing. But alone, myself, as you would also appreciate, right? I'm not going to go and file a case in Australia for a person in India
and then I have to go, traveling back and forth, whatever the case may be. Even though I would love to come to India now, but the restrictions are still in place. But if you start that petition on there to say, okay, we need the Delhi government and Kejriwal, hope he's not involved. I'm only hoping, that would be kind of a stretch for someone to give that much importance. But if we just file a petition, uh, and then people, whoever are talking, they just say and agree to that petition, and maybe the petition should be worded in a way that everyone with an evidences, whether it's audio evidences or a video evidences, just try to secure those before it gets deleted. I got my stuff enough on my phone, so that will probably give some form of attention, because otherwise it will be just we will talk about him next. After, I think tonight, I'm sure he will make something, or Varun ki poll mein kholunga or something video, and then Grace or whoever that lady will come in and say, I know where he's living, I know the IP address, and the blah blah blah. We are just spinning the wheel here. So if you start the petition, that is some kind of a slap to say, okay, it's a petition. And I'm not sure if it's free to start the petition, or you have to pay to this organization, the petition.org. Okay, let me figure that out. I will definitely figure that out. Yeah. I think I can. And if you need help, let me know offline. Sure. You have my number. So Yeah, we'll talk. Even All if we two of us, that we can still fight it. Sure. Thank you so much, Vishal. Everyone, chalo, Jai Bharat to everyone, and have a safe life, and secure yourself. One second, Vishal. One second, Vishal. 1 second. Actually, just for everyone else as well, there is somebody, Bhakt of Mahakal, in the back private chat. अब वो कह रहा है कि अगर विशुद्ध कैमरा ऑन करेगा तो मैं कैमरा ऑन करके आऊंगा. So there is someone who's asking me to turn on get him on the stream. He wants to ask 10 questions to me. And I'm saying, if you turn on the camera, I'll take you. Now, the question he put was, why was Vishruth without camera? So I asked Vishruth to turn on the camera. So Bhakt of Mahakal, Vishruth is on with the camera. Now, if you have any points, please turn on your camera. I will take you. If you don't turn on the camera, I won't take you. Give them some time, huh, Varun? Yeah. नहीं, कोई 10 क्वेश्चन आए हैं ये, तो जो भी हैं, again, I have never run away from anybody's any question. So I will be more than happy to take your questions, but you definitely have to turn on the camera. So I'll still wait. You asked me for this, and Vishwas has turned on his camera. So यहाँ पे अभी winter है, so I'm wearing the jacket. Sure. Okay. All right. Even though I'm waiting, the moment you turn on the camera, I'll take you, and I'm gonna move. So Vishwas, if you wanna, stick along, just be on mute, and I'll move to other people. Thank you. All right, Joy, please go ahead. Hey, hi, Varun. It's been long. I've been watching you all, what to say. And whatever happened with Sushant and all, that's okay. Look, I mean, I don't know when we'll be getting the things correct, also whether we'll be getting it or not. I have no clue about it. But anyways, what to say, you all talk big. I mean, all to the points and very correct, In the meantime, I just wanted to share one thing. This person who is actually dealing with all the persons who are in love with Sushant as a person he was. And eventually, what I felt is he started on a point where I also felt he was correct. We were driven to, not only me, I guess everyone, I guess. Yeah. And eventually what I found, things started changing, day by day and so on. Nowadays, I don't know why I wasted my time on that person. I really don't understand. There was a time when there was a respect, a little bit of respect was there. Yeah. Eventually, what he is doing, I'm not saying anything was doing good, bad. No, not that. That's not the point. The point is, why do we come up with, things what justifies yourself only? Rest of the people don't believe on those facts. You're getting my point, Varun. Mm-hmm. And
what do you do? Do we do anything good to us by doing such things? I don't think so. I absolutely don't think so, because what is there in you, if eventually up to a level that is hidden, after that that starts opening up, and eventually you're exposed, somewhere you're exposing yourself to the community. Correct. What big deal you're doing? I mean, I don't want to, abuse someone. There's no point abusing. I feel they are very silly people with very, very silly kind of mind and spoiled brain. What else can we say about it? Yeah. I mean, I have been with, Sushant since the day it happened. Uh, I still love him. The love and respect from him for him will, it will be for lifetime, Sure. till I go to the deathbed. But the matter of fact is, people are making hell lot of people are making it a nonsense thing. Yeah. I mean, moreover, the situation what we are dealing with. I'm from Delhi. You know it, I guess. I'm from Delhi. Now we are home. We are just sitting home. We're doing something. Now we should do something constructive. What can help people some way or the other? What's the point of making money by doing all nonsense? And I also don't understand how people put their brain and get blended with such thoughts. How can you blend into such thoughts of where it makes no sense? I, yeah, I've been trying to talk to you since long, but I know. I don't know. I No, never tried to get into this field. you're absolutely spot on, as of many of us right now. And you brought up a very good point again. I've said it multiple times, Joy. I'll be very honest. Yeah, I know. The way we started off, definitely, I was also of the opinion that we were going in the right direction. No doubt Yes, about it. And that is the yes, reason why I continued. A lot of people asked me a question in the past: why did you do it for so many days? It was very yes, simple. I did it yes. because my heart said, whatever is happening for good. We're going to clean up a lot Exactly, of dirt, a exactly. lot of mess, and I will be more than happy to support this cause. And then Yes, if somebody, absolutely. just imagine, just put yourself in my shoes. If you are out of India, for example, and you Correct. get an opportunity, if someone says to you, okay, I am an IB officer, I work for the Hmm. intelligence, and I indirectly or have a dotted line relationship with the Home Minister of India, and what we are doing is like a service to the nation. As Correct. a very proud Indian, as a very proud nationalist, I would say, or somebody who loves his country more than anything else, I would be on seventh, nahi, ninth, nahi, 100th heaventh. I would say that, okay, you know what? If I am able to play any role around my country and do some cleanup, I'll be more than happy. Indian, that runs in my blood. I am an Indian. I'll be Indian till the last breath I have. So nobody can take that out. So if Yes, that was the absolutely. emotion that I was playing with, that I will make sure I will help him in any way I can. I woke up at odd times. I did so much just because I felt that he was. The moment it took a U-turn, the moment it went on a different tangent, वहां से यार, I swear I was like, मैं I could not bear it. Now I know, I coming know, I to know. coming to the present situation, it's getting murkier and murkier, and it's getting so dirty. Absolutely. People telling that Absolutely. Sushant is alive. Then if somebody is alive, then That's why are you even ridiculous. doing a That's record? ridiculous. You're rather insulting the person who is no more there. Exactly. And then, Yeah. more than that, insulting the person who's dead, you are Yeah. now maligning and insulting his family. You're insulting our country, the head of our country. You're not See, there leaving is any. no ethics in him. Actually, no ethics about nothing. Actually, this is what I understood about his life. Yeah, I don't know. I What to mean, talk? yeah. So I mean, that's what I want to say. Okay, ab is time pe people question me, why are you wasting your time? Why are you wasting our time? I tell them, I'm not wasting your time or my time. Yes, maybe my time for sure, and a little bit of your time as well because you're watching this. But if you are watching, if you're listening to this,
I hope and I pray that you share it with 5 people. You talk to 5 more people and tell them that this is the kind of scam that can be run on social media. These are the kind of people who will loot you of your money, of your Yeah, personal information, of your modesty. So that becomes even more important for us to talk. Agar thodi bahut bhi meri reach hai, if there is, like, say, even 100 people watching at a given point of time, those 100 people, if I multiply, even if they talk to 2 people, that means at least 200 people more. If correct. those 200 people again go and talk to another one individual, It's it kind of gives. a forming chain, Exactly. you know. So that's my whole motive. I don't like to Yeah, do that. Imagine it's 2:34 a.m. here. I रात के understand. And सुबह के 3 बजने वाले हैं मेरे. it's not a matter of joke for you. You know, you're doing Exactly. your own This is stuff. serious. अरे Then you're resting your time for us. You know, हाँ, us in the sense for you as well. You know, correct. for us all. You know, Tomorrow it could but be it my is own just for family love, members yeah. who might be duped, right? My own family members who are sitting there in India or anywhere around the Yeah, world, they could be right. duped of a lot of money. उनकी Yes, पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर निकल गई, yes, किसी ने yes, कहा यार yes. वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, चलो यार हम भी रजिस्टर करते हैं, तो This is ridiculous. दिस इज रियली What to रिडिकुलस. talk about? This is what to. I mean, I don't know. Someone just said we should file a petition, and that's really interesting. I mean, we should do in case there is a provision. We should do. Though I don't know much about laws and all, but Yeah, in case there is an hope and there is a, you know, this show and whoever is honestly doing something for Shushan with a goodwill, you know, that is a ray of hope for us. You know, hope for justice. You know, that is what we are living up to and looking up forward to. You know, in right, future there will be something where the things whatever has happened will be all clarified and justified. right. You know, moreover, these nonsense elements in between, they, you know, actually diverts a lot of people's mind some way or the other. We Right. need to extract all these things some way, you know. Anyway, we have to start at a point anyway. Correct. No, I'll take his point, Vishnu's point, very seriously. I'll Yeah, look yeah, into that yeah, information and I'll share yeah. when the time is right. So Yes, again, yes. thank you. Anyways, I thank everyone since the day you started your journey until today. Though after a long time we are meeting and on, Yes. you know, maybe on screen. But anyways, thanks a ton Thank for you so all much. the things you're doing. Thank God you so much. bless. Take care. Thanks. You God too. bless, God Varun, bless. and Yeah. you all. Yeah. Thanks a ton. Bye bye. Thanks. Bye bye. All right. So before I take common man, Yar Bhakt of Mahakal, Vishrut, can you please just turn on the camera for 1 more minute, guys? And please hold off because I really want to address. I don't want to make this another 3 hour, 4 hour window. Yeah, it's 2:30. Thank you so much. All right. चलो भाई आजा. Bhakt of Mahakal. मैं पीऊंगा नहीं because I respect Varun. Thank you so much. So, Really you appreciate know, that. Really appreciate that. Bhakt of thank you. Mahakal, he's on the camera. You turn on your camera. I will take. Face the Mahakal. So we are waiting. We are waiting, Bhakt of Mahakal, before I take common man. Varun bhai, take him on. No, without the camera also is fine. No, Take no, him no, on. no, no, no. Policy is policy. यहाँ बहुत सिगरेट महंगी मिल रही है, $2 की एक होती है स्टिक. So I will just turn my camera off. If he has guts, I will turn my camera on. Okay. Another time, सुन रहा है तो hey भक्त, face your Mahakal. If you have guts, open challenge. Okay. I really don't understand what is the logic for all these stupid things people are doing. Making things like this. I mean, we are not into a fight of Exactly. I don't one-on-one know. on camera here. Yeah, या it's तो just 10 questions, right? And he wants to ask 10 Mahakal. questions. Just turn on the camera and get it done with, yeah. Why are you wasting everyone's time? Either he's in sorry Vishnu, I just on washroom. You are on the washroom, you are in the washroom. Washroom में पता नहीं क्या कर रहे हैं. मैंने पहले बोल दिया. I have said in private that I am not a gay person. Okay. Okay. So, sorry. Okay. Let's just stick to the point. So please, yeah. Thank you so much. Okay. Bhakt of Mahakal, he's on. Yeah, Bhakt of Mahakal. Seriously, we are wasting a lot of time and. स्क्रीनशॉट ले ले, वो भी कर ले. मेरी फोटो एडिट कराना है और मेरे को फिर
वरुण को Okay, बोल देना कि Vishal, mute, yaar. Mute. Don't talk. Let's just wait. Let's finish this Bhakt of Mahakal. I got other things to do, man. Come on. I know. I also have to end this session. I also have to end this session. Okay. आ जाओ I भाई, think he's just wasting time. मेरे पास आ जाओ, मेरे पास. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम. I like that song anyway. Okay. Common man. While we are waiting before I end the session, I think I definitely want your sense of humor as well. ओम त्र्यंबकम भजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम करुणारुकवे वंदनातम मृत्यु मोक्षम यमामृतात्. I Repeat think we करके should बोल not सकते हो spoil तो our, बोल. mood for Sure. this. Okay, let's not do that then. Okay, Yeah. I don't think Bhakt of Mahakal, you are coming, so there is no point. We'll move on with other people. I want to be mindful of their time since you're not mindful of anybody's time. Anyways, yes, common man. Hi, Varun. How are you? Good. How are you? Can you hear me loud and clear, man? I'm fine, thank you. Loud and clear. Can I request you to mute others so we don't get echo, please? Sorry, what? Sorry, I'm just going to put my volume a bit louder. Can I request you to mute others so we don't get the echoing issue, please? Perfect. Oops, sorry. I started with you. I muted you. All right. Okay. And now I am going to go on mute myself. Give me 1 second. Okay. देखो, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि सबको, जितने भी है, सबको हिंदी में समझ सके. ठीक है. देखो, पहली बात तो मेरी condolences, please accept my condolences, जिन लोगों के they have lost their dear ones, loved ones, etc. और even I've lost someone very dear to me, so I understand, I'm totally with you. कहना यही चाहूंगा कि देखिए, बहुत से लोग हैं, सब आपको डिफरेंट एडवाइस देंगे और दे रहे हैं. they are doing it for your welfare. There is important information, but there are other informations also which they are giving you. और दूसरी भी information दे रहे हैं आप लोगों को, जो कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये लो, वो लो, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह. ठीक है. देखो, बेसिक चीज है कि आपको सबसे पहले अपने खाने का ध्यान रखो और अपने पीने का ध्यान रखो. पीने का मतलब पानी और जूस होता है, दारू नहीं. ठीक है. दारू मतलब पीना नहीं होता है. दारू पियोगे गारंटीड. ओके. दारू पीने से आपका पूरा जो अंदर का पानी रहेगा वो तक बाहर निकल जाएगा. सो पीना मतलब पानी और जूस. फ्लूइड्स आपका ऊपर रखो. दिस इज द बेसिक है. ठीक है. और रही बात कि बाकी के जो इश्यूज है एक्सेट्रा. ठीक है. सॉरी टू से दैट, माफ करना कि आप लोग हो मुश्किल में, मगर साथ में रहो, मिलके रहेंगे एंड आगे बढ़ते हैं साथ में और निकल लेंगे यार. इससे भी पहले भी है ना, बोलते कि ह्यूमन रेस, हम इंसान बहुत कुछ चीजों से निकल चुके हैं, इससे भी निकल लेंगे. और इससे निकलने में थोड़ी तकलीफ तो होगी, बट आप अपने बेसिक्स चीज का ज्यादा करके ध्यान रखिए. और एक रिक्वेस्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने हाथ क्लीन रखिए. जरूर से हाथ धोइए. ये करिए, ये ज्यादा करके फैलता कहाँ से? हाथों से. अब जिस चीज को हाथ लगाओगे और आपके हाथ क्लीन नहीं है, वहां से आप फैला दोगे. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप फैला रहे हो. ठीक है. तो आप जो कुछ भी करते हो उसके बाद हाथ धोइए, प्लीज. और मैं यहाँ पर मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, ब्रिटिश इंडियन हूँ. सामने से तो पासपोर्ट लाल रंग का है, पर अंदर से पासपोर्ट ब्लू रंग का है, एज यूजुअल इंडियन. ठीक है. जैसे कि वरुण कहता है कि ना, मरते दम तक या एंड तक हम लोग इंडियन ही रहेंगे. तो मैं यहाँ पर प्लीज लेट मी कंप्लीट इट.
Yeah, but you are stretching it too far because Varun has his life of his own. He is spending time on the chat or the No, session. no, no. That's One second, not. one second. Naushad ji. It's okay, it's okay. Abhi, let's give everyone the same time. So I'm gonna put myself again back on mute. Let him finish. Let him finish. It's okay. Thank you so much. देखिए कि देखिए बेसिक चीज है कि आप लोग है ना, यू कैन वॉलंटियर. मैं भी यहाँ पर वॉलंटियर करता था कोविड के लिए, और बेसिक चीज है जो कोई भी वॉलंटियर करे, कीप योर मास्क ऑन, आप ग्लव्स पहनिए, एंड प्लीज हेल्प अदर्स. जितना आप मदद कर सकते हो मदद करो. वॉलंटियरिंग आप करते हो, आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर दैट योर कवरिंग, और आप जिसको मदद कर रहे हो उन्हें भी मास्क पहनने की याद दिलाइए. दिस इज द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू शेयर. और प्लीज अपने बेसिक चीज का ध्यान रखिए. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम, वरुण. Thank you. No, thanks for expressing your views and your thoughts, and this is very important. This is really very important. Taking all the precautions. जैसे मैं बैठे भी मैं I'm constantly I was monitoring. I touched my nose. I touched so much. यहाँ फिर भी we are restricted. We are still a little better off. In India, all these things can lead to really very serious repercussions. So please be mindful what you are doing. Always constantly wash your hands, constantly use sanitizer. So I definitely want all of you to please follow the instructions and the guidelines for this. This is really really serious and important. So thank you for doing that. And like I said, Common Man would love to now have you. We've talked in the past, we never had that session. Let's just get going on a session where we spread a little bit of cheer, because now at this point of time, this is the need of the hour. We need a lot of cheer, lead a kind of a lot of hope. लोग हालांकि मुझे कह रहे हैं कि stop giving hope. Hope is not something which is the need of the hour, but I personally feel that we really need to get people going and spread a little bit of positive energy, because that's what they need right now. So again, we'll talk again. We'll definitely set up something, and we'll get some positivity going for sure. Sure, bro. Thank you for having me. Take care. Bye. All right. Yeah. So I don't think Bhakta Mahakal is going to do anything, but let's go. Dhruv, I think you want. Oh, sorry. Before I take you, Dhruv, Naushad ji, बहुत देर से wait कर रहे हैं. Naushad ji, please go ahead. Yeah, Varun, to cut the long and short of everything, I am not trying to apple polish you like always. I say it in terms of your concern. Yeah. That you are, contributing your time, your valuable time, that too, towards the project or the movement of SSR and other related topics. However, it does not mean that people keep on stretching and stretching. Do you think that we all don't know how to, maintain hygiene and all that? We all know about this. This is from our. No, Naushad ji. I'll contradict you. I'll contradict you there, because I'll tell you why. In not only in India, even here, I will tell you from a personal experience. We were walking close to a lake that I have, and there were a set of few people who were walking there without masks. Okay? They're not exercising, they're just walking, casual walk, and they were without a mask. So these guys, the entire world right now knows that we are going through a certain. हमारे यहाँ पर I'll take a picture and I'll post it on Twitter tomorrow. There are boards. हमारे यहाँ सड़कों के intersections पे they've put the boards, big boards, where they say mask is a must in this city, which means you cannot be without a mask anywhere. So फिर भी लोग norms follow नहीं करते. So it's always okay, and every session we do everywhere, I think we should definitely do that. Spread the word. So it's okay. But yeah, please go ahead. आप बोलें. Yeah, the thing is that number one, since you are already in US, I would appreciate that you do your spade work in finding out what is the new world order, what is the Illuminati, how much is Bill Gates involved in spreading this fear syndrome and
caring people to wipe out the population of the world, control the world economy and the world government. This is a serious thing happening, and people are being shut down. Or world economies are collapsing, all because of this group of 60 elite rich people of USA. I'm serious about this. You need to do this paid work. I am reading a lot about this. I'm doing a personal research on this and spreading awareness. My friends in UK, they also know about it. They're going to protest this in London on this particular topic of the Illuminati and the New World Order. I think we all are educated with things like Twitter, Facebook, Instagram. We all should voice it out why this is happening. It's like, this is like what has happened, that before an antivirus company would come out with a new antivirus copy, they would spread the virus first, and then they say that you buy our antivirus. So this is all pre-planned. Why don't we educate ourselves in this thing? Once fear is created in the minds of the people, half the people will die because of fear syndrome. Half the people will die because they don't have affordability to live a life of mask, sanitizer, this, that. I have hardly used sanitizer in the last 15 to 16 months for more than 18 times, believe me or not, and I have not fallen sick. Ask them to provide documented proof of really how many people have died of COVID. Nobody is providing you the right facts. Why are we getting carried away, and why are we getting scared? The first thing we all need to do is to keep our immunity level in check is by not getting fearful. If you fear, jo dar gaya so mar gaya. So please, you are an educated person, you are a well-read person. You should not get carried away by what Bill Gates Foundation or anybody else is trying to, get us feel So scared and all नौशीर जी, that. आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज इन्वॉल्वड इन स्प्रेडिंग फेक न्यूज? You are not understanding. Do you know that how much involved is the WHO, the World Health Organization? They are involved with the New World Order. Now, there are certain things the international governments also have to succumb to and keep quiet till they have complete proof against them, and then they can fight against that. You people have to understand. You have to educate yourself in such a way that you don't get carried away. The same way as the people make the government, the same way people can expose the bad people. This is the war of righteousness against the evil doers. Yes, I think there should have been action against China. China के खिलाफ तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा. Not only China, the Illuminati, the New World Order is composed of China, Biden, and Bill Gates, and even the Facebook, Mark Zuckerberg is involved in this. Okay. सर, ये cannot हवे में बात नहीं कर सकना चाहिए. हवे में बात नहीं करना चाहिए. कुछ एविडेंस, आपके पास कुछ एविडेंस है क्या? एविडेंस है क्या? Do you have any evidence? Yeah, 1 second, guys. Sorry, I'll interject. Noshad ji, let me talk offline. Yeah, let's not talk about Illuminati. That is Varun Kapur, since he's in US, he can do the paid work and find out. Let me talk to you offline. Yeah, I will talk to you offline for sure. Thank you. And only thing we need to do is not get scared. Because when you get scared, your immunity level drops. Yeah, absolutely. And I think we've emphasized it enough, guys. Very important. Again, I'm going to repeat it. Please be very strong against this. Be very positive. If you lose hope, if you lose that energy, your oxygen level will drop, and of course your thing will also get worsened. So please be very strong and hopeful against, and you can fight it. Anybody can fight it. So let's fight this battle. This is an unknown enemy, invisible enemy, as I call it. So we will still fight this invisible enemy, and we'll come out victorious. All right. Yes, Gaurav, before I take you 1 second. Thank you, Noshad ji. Dhruv, please go ahead. You have been waiting to say something. Please go ahead. Varun, Dhruv, you mute.
Yeah, Varun. Yeah. Good afternoon, Varun ji. Good afternoon, Good Vishnu afternoon. ji. Good afternoon, all the other panelists. Hello, Sachin bro. Hello, Naushir ji. Varun, I just have basic one question for you. Yeah. Someone has tagged me on Twitter with the screen recording of you following Imtiaz Khatri fan club. Can you Yeah. please explain this? Absolutely. Great क्वेश्चन क्योंकि आई थिंक इसके लिए भी मेरे को थोड़ा टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और मुझे आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है. Again, I'm not an investigative agent or agency, or I don't run any kind of. I don't have a team of people who do like the investigative work for me. It's me who does all the analysis. It's me who goes to different profiles to figure out details, to get details, and to do my own research. Now, there are tons and tons of IDs that I follow. Uh, Obviously, if you all remember, in one of the sessions, somebody said, "One second, I will be muting someone who's making the sound." No, Shirji. Okay, thank you. So somebody said, "Can we figure out more details around Imtiaz Khatri?" So I tried to get in touch with Imtiaz Khatri's ID everywhere, and I couldn't connect. And then I found this Imtiaz Khatri fan club, and this is a club where और कुछ मिले ना मिले, I could find a lot of pictures of Imtiaz Khatri. Now, if you remember the session that I did, it's still there. It has a photograph there, which I definitely took from the Imtiaz Khatri fan club itself. So uh, just by following someone doesn't mean follow. तो मैं बहुत लोगों को करता हूँ यार. I might be following some of the people who are anti-national, some of the people who take drugs, some of the people who are doctors. Now, do I endorse all of them? I don't think so. I mean, just following them doesn't mean anything. So targeting me for following anyone makes no sense, because there are thousands and thousands of people and thousands of issues for which I definitely need to do my research and study. Now, if I follow somebody, doesn't mean कि उनको follow करने से मैं उनको endorse कर रहा हूँ. So, चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चक्रव्यूह में घुसना पड़ता है. Very well said. Very well said. Okay, I think that sums it up. पर घुसने के स्पीड में ना भाई, अभिमन्यु नहीं बनना है, अंदर जाके अर्जुन बन के बाहर भी निकलना है. वो तो निकलेंगे सर. अभी आप जैसे लोग जब तक रहेंगे आसपास, we are all going to be victorious. I am very confident of that. Varun bhai, let me tell it on record again here today. I told it on Vibhor Anand's show as well. I will only stand with the truth. That's it. And my second question now to you, most important and most interesting. Who's Varun Sinha? वो तो मुझे भी मिला दो यार. I would love to meet Varun Sinha. क्योंकि one thing which I'll tell you very seriously, on a very serious note, हालांकि मैं इसको मजाक में उड़ाना चाहता था, but I'll tell you, I am very serious about my last name. The reason is, Varun तो मेरे parents ने दे दिया. Varun is a very, again, it's a dear name, no doubt about it. But जो मेरा last name है, वो मेरी lineage define करता है. मैं कहाँ से हूँ, किस area से हूँ, मेरे forefathers, मेरे grandfathers, मेरे खुद के, the entire lineage, my entire thing is on my last name. You know what? Let me make it interesting for you. I'm gonna move my camera. हालांकि मैं ये कभी भी नहीं करता, but let me do it. This is something which is on top of my wall. Okay. ये मेरा एक, that's how special my last name is to me, that I have these things on my screens and everywhere. I use Kapurs everywhere. Again, this is some kind of proclamation. Again, उस पे भी मेरा नाम है. Anyways, I don't want to show everything, but end of the day, all I'm trying to say is, this was not to prove that my last name is Kapur. This is how special and how privileged and how blessed I am with this last name. Varun, you are answering a question to that person. मतलब मैं fake I'm बेवड़े की बात answering कर it. रहा हूँ. No. I'm answering it to Dhruv. Dhruv ने question पूछा, right? No, Who's Varun because Sinha? बेवड़े ने ही क्वेश्चन ये किया है ना अपने लाइव हाँ. सेशन में. Yeah. तो ये जो बेवड़ा है, इसका हर एक नैरेटिव फेक निकला है, and it is on record. It is on public platform. He was caught doing fake live sessions about Dhobi Pachad, Nasif. He was caught Sachin on bhai. live session faking. Sachin और bhai. ये आदमी किसी के लास्ट नेम के ऊपर कुछ
अगर तेरे पास गट्स है तो तू दिखा ना, एविडेंस दिखा ना। सिन्हा है, दिखा, एविडेंस दिखा, प्रूफ दिखा, Sachin bhai, कुछ कर। या God forbid that doesn't happen to you. You get a medical report tomorrow telling that you have ringworm on your skin. Will you put that medical report all over the internet, start talking about it to people, or take the action against it and cure it? Okay. Again, I'll end this. मुझे नहीं पता ये वरुण सिन्हा कौन है एक्चुअली। जैसे चैट में लोग पूछ रहे हैं, लेट्स ऑल ट्राई टू फाइंड आउट, let's start, Varun, or something. bro, Let's find who this Varun Sinha is, because I would love to meet this Varun Sinha myself. Varun bhai, listen Yes. to me for a moment. See, I was not done. I was wanting your answer out of it. Sachin jumped out of nowhere to counter that. The simple thing is, what was the topic today? The today was topic Penguin is back. Yeah. From there, the topic went to COVID. From there, the topic went to Vibor. From where the topic went to No. N There number were of two places. topics. There were two topics that we wanted to talk. One was Penguin was back, and second we did expose this website, the world record for SSR, just pay a lot of screw up is happening through the information that is being sucked. Now, then I will have to go back and see the live. But humble request to everyone over here is talking everything on YouTube channels like what Nashirji did, what some people did. That is not the way to go. See, as I keep always telling, whatever we do right, whatever you do right, it should be known only to you. Yeah. Okay. Yeah. All right. Let me take Gaurav. Dhruv, I think his battery discharged again. Gaurav, please go ahead. Yeah. Good afternoon to everybody. Good afternoon. Yeah. First of all, I have great respect for Noshirji. But one thing I will differ from him that common sense is not so common. So this is what we all know everything, but that's not necessarily we really do those things in a right manner. So reminding and refreshing everyone's memory about the precautions is not bad at all. Okay, that is my view. And the second thing is that what I agree with Noshirji on that point, that it's a larger conspiracy, COVID. I think everybody can guess this, that what happens in China and in what manner, किस तरीके से वहां पर सब कुछ हुआ, वुहान से बाहर. तो WHO, इवन डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो कुछ स्ट्रिक्ट हुए थे चाइना के अगेंस्ट, बट किसी कंट्री ने नो कंट्री साइडेड विद हिम, नो कंट्री प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इंक्लूडिंग इंडिया. मैं बात कर रहा हूँ चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेने की या कुछ करने की. WHO ने भी कुछ नहीं किया. अब इसमें क्या भैया जब पूरा वर्ल्ड कोरोना से मर रहा है उस टाइम में कौन वॉर की बात करेगा यार? पहले लोगों को मरने से बचाओ, उसके बाद वॉर के बारे में सोचो. ये डोनाल्ड ट्रंप की एक नंबर का पागल है. Sorry, I'm using that word. Sorry. Guys, Yeah. Okay, let's be mindful. Sorry. I'll take that back. I take those words back. I'm sorry for using that. But can you imagine he told that you have to inject chloroquine या जो भी है. लोगों ने क्लोरोक्विन क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर को इंजेक्ट कर सकते हैं क्या? या यूवी लाइट अपने बॉडी के अंदर घुसा सकते हैं क्या? क्या बात कर रहा है यार ये? And he is the president of the biggest powerful nation. Ex-president, yes. But Gaurav, to your point, you're right. यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, especially US में एक सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी कि इस वायरस को चाइना वायरस भी नहीं बुलाने दे रहे थे और लोग उसके ऊपर इश्यूज बना रहे थे. When we all know this वायरस की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है. So your emotions, your sentiments are not wrong, but the situation is so bad. The situation is so bad. इस टाइम पे या तो हम उनके साथ लड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, या किसी तरह के डिस्कशंस में पढ़ सकते हैं, या पहले हम अपने लोगों को बचाएं. अब obviously we all know what was the source and where was the source, but जिस तरह से उन्होंने अपना डेटा हाइड किया, जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि उनके तो कोई डेथ्स ही नहीं हुई, nobody can question कि भाई कैसे हम उन डिटेल्स को निकालें, right?
या तो हम एक अलग ही तरह की वॉर शुरू करें उनके साथ मिलके, बट वी ऑल नो व्हाट चाइना इज केपेबल ऑफ। बट एट दिस टाइम या तो हम वो इस तरह की वॉर शुरू करें, या हम वेट करें यार कि फर्स्ट लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम डजंट सीम टू एंड। जिस तरह से आप देख रहे हो इंडिया में नया वर्जन आ गया है, यूएस में भी आप कह रहे हैं कि देयर कुड बी अनदर वेव। this problem is not ending anytime soon. So I think we should just focus on that first, and then no doubt about it, I'm very confident, I somehow have a feeling ये कुछ countries मिलेंगी and they will take very strict action against China. So नहीं, I really wish so and I really pray for that. I hope so कि चलिए अभी तो देखिए अभी आप सिचुएशन को बता रहे हैं, इस सिचुएशन पूरी दुनिया को इस तरह बर्बाद करके रख दिया, और चाइना में आप बोल रहे हैं कितनी डेथ्स हुई, कितनी क्या हुए। ठीक है, अभी हमारी हालत खराब है, अभी हमें अपनी लोगों पर ध्यान देना है, लेकिन जैसा कि आपने कहा सब कुछ ठीक होने के बाद ये तो फिर दोबारा कोई वायरस पैदा करता रहेगा, दोबारा कुछ करता रहेगा, ये तो बायोलॉजिकल वॉर हो गया ना एक तरह से, ये भी तो वॉर ही है। ठीक है ना, तो ठीक है, अभी हमें अपने लोगों की सेहत पर मतलब इलाज पर ध्यान देना है, ठीक है, वो साथ से मैं एग्री हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारे इंडिया में अपने अगर इंडिया के लिए बात करें तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ना सिर्फ कोविड के लिए बल्कि किसी भी चीज के लिए हमें जल्दी से जल्दी पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट ले आना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, और शायद बहुत कम लोग होंगे जो मुझसे डिसएग्री करेंगे इस बात पर कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट आना चाहिए। हालांकि मैं किस मैनर में आएगा, उसमें आप पेनल्टी क्या लगाएंगे, वो उस पर डिबेट हो सकती है। तो बस ये हल्का सा ही कहना चाहूंगा ये। और वरुण, आप जो कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, आपकी बहुत अच्छी रिसर्च है, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस। और ये आपने जो आज किया पेंगुइन का, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो इमेज मेकओवर का है, पीआर का काम है ये। yep. तो बहुत ही बहुत सारे डिफरेंट, और सिर्फ एक नहीं है, आज मैंने एक के बारे में बात की है, मैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल शो यू फ्यू मोर पीपल जो ये इमेज मेकओवर में लगे हुए हैं और अपने बिजनेसेस को अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत हैं, और सारे पीआर, द बेस्ट जॉब राइट नाउ, एनीबडी हु इज अनएम्प्लॉयड गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, anybody who's unemployed, this is the best job profile जो आप एक इस टाइम पे unlimited amount of money you can earn, because the way people are projecting somebody who they are actually not, अगर आप उसमें थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, people are throwing money, these people are just throwing money away. So this is, again, I'm not encouraging, I'm just saying कि इस टाइम पे PR सारे के सारे जितने भी स्टार्स कह लें या जितने भी गलत जो काम करते हैं उनके जो एजेंट्स हैं, आई स्वेयर टू गॉड, जितना मैं देख रहा हूँ लास्ट के कुछ दिनों में, एंड मैं तो बल्कि वेट कर रहा हूँ, एंड आई एम थ्रोइंग दिस ऑफर ओपनली आज कि अगर किसी को रीच आउट करना है, आओ हमसे बात करो, हम भी आपको बताते हैं कि हाउ वी कैन हेल्प यू क्लीन योर इमेज। देयर इज सो मच दैट यू कैन डू, जस्ट जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, अगेन आई एम गोना गो बैक टू द सेम, वीरेंद्र सहवाग, the best thing you could do right now is open your school gates and make them COVID hospitals या COVID spots जहाँ पर put ventilators, put beds. You have so much money, you made a lot of money with not only school, with your cricketing, with all the businesses. It's time to do something good for the people. लोग कारों के अंदर बैठे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में, अब they're losing their lives. Do something. This is the actual PR that will work for you. Do it right now and you will reap the benefits later. तो अच्छे तरह से भी पीआर हो सकता है, सिर्फ फेक कमेंट्स, फेक बॉट्स चला के अपने आप को अच्छा दिखा के उससे नहीं चलेगा। डू समथिंग रियली गुड फॉर द पीपल एंड यू विल गेट इट। बट या, एनीवेज, थैंक यू सो मच गौरव। ओके, थैंक यू आपके, आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द सोसाइटी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गौरव। ऑलराइट, सॉरी मिस्टर इंडिया, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, प्लीज, आई नो यू बीन वेटिंग। नो प्रॉब्लम, मुझे बस यही कहना है कि ना, जब से एसएसआर का जो भी सारा शुरू हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिला था वो था वीए को, और वीए ने उसका बहुत फायदा उठाया है। उसने हर जगह जाके जहां जहां उसको बेनिफिट मिल सकता था उसने वहां पे फायदा उठाया, क्योंकि उसको पता पड़ गया कि उसकी वर्थ कुछ नहीं थी, बट अगर वो इस जगह पे आके और फालतू का नैरेटिव्स फैलाता है तो लोग देख रहे थे, बिकॉज हम लोग इमोशनल फूल्स हैं जो कि सब चीजें देखते हैं। और आज भी वो यही चीजें कर रहा है, आज भी वो कोई नया यूट्यूब चैनल बनाएगा तो 50,000 लोग जाके ऐड हो जाएंगे, आज भी वो कोई नया ट्विटर अकाउंट बनाएगा तो 50,000 लोग जाके ऐड हो जाएंगे, पता नहीं क्यों है। और रोज दारू पीता है,
रोज पता नहीं कौन सा सपना देखता है और कोई नया नैरेटिव लेके आ जाता है। शक्ल से दिखता है कि ये पी के बैठा है या कुछ भी है, बट पता नहीं लोग सुनते क्यों है, मैं समझ नहीं पाता हूँ आज तक। Yeah. दो चीजें बोलूंगा इस पे। ये जो कमेंट आपने बोला, आई एम गोना जस्ट गिव यू 2 पॉइंट्स हियर। फर्स्ट थिंग, अनफॉर्चुनेटली ये जो आजकल चल रहा है उसके बेसिस पे व्हाई ही इज रैटल्ड इज बिकॉज अब ही इज लॉस्ट दैट वो जो स्टारडम थी जिसको ये फेम मरता फेम था। फेम हाँ, वो फेम इसको अब इसका, क्योंकि वो कहते हैं ना ये डाउन द हिल हो गया, बिल्कुल जा रहा है, तो इसको नहीं हो रहा, तो इस वजह से भी ये रैटल्ड है कि अब क्या हो गया कि लोग अब ना मुझे देखते हैं ना सुनते हैं, ना मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ना मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया। तो एक तो वो उसकी प्रॉब्लम है। दूसरी, he really started with a very good intention. मैं बार बार बोलता हूँ, I have no hatred against him, but he started off very good. He could have done a tremendous amount of work. He would have really helped all of us in cleaning up. और इस टाइम मैं वही बोलूंगा, चाहे वो एजेंसीज हो, गवर्नमेंट हो, पुलिस ऑफिशियल्स हो, कुछ भी, उनके अलावा he was able to get the power of common man, जो किसी भी स्टार को स्टार बना सकते हैं और किसको डुबा सकते हैं, और हम वो कर रहे थे। We were on the right track, चाहे वो कोई भी स्टार हो, अक्षय से लेके सलमान से लेके anybody, we were going in the right direction. I don't know what happened. I don't want to say anything against him. Whatever he did it very wrong, and after that we totally lost respect for him. आज की डेट में अब इसको कुछ नहीं मिल रहा तो किसी को भी पकड़ रहा है, मुझे फ्रंट लाइनर बोलेगा, मुझे, मेरे तो इतने सेशंस कर चुका है ये। सरप्राइजिंगली जो मुझे कहता था कि मुझे बनाया है और मेरा धंधा चला रहा है या मेरा ब्रेड बटर और दारू चला रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, आज की डेट में अपने चैनल पे जाके देखे इसके सेशंस के अंदर कितने ऐसे सेशंस ये कर चुके हैं जहां पर ये मेरा नाम यूज कर रहा है। तो अगेन ही कैन यूज मी, ही कैन डू एनीथिंग, बट थोड़ा सा लिमिट में रह के टाइम पास करे, क्योंकि लोग वहां जा रहे हैं टाइम पास करने, जाएं। मेरे को उसमें एक्चुअली पैसा बनाओ यार, जब यूट्यूब से बनाओ जो मर्जी, बेवकूफ मत बनाओ लोगों को, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत शेयर कर मांगो, उनसे पैसा भीख मत मांगो। अगर तुम्हें कुछ सही करना है, डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, मनी विल कम टू यू, डोंट वरी अबाउट दैट, डू द राइट थिंग, एवरीथिंग राइट विल हैपन टू यू। अगर तुम ऐसे 400 बीसी करोगे तो यार फिर वरुण कपूर बहुत खड़े हो जाएंगे। वरुण बहुत हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, और वरुण से ज्यादा एग्रेसिव भी वरुण होंगे जो बहुत कुछ करना चाहेंगे। पर I want to add something. I want to add something to that note. okay, Sorry, Mr. India. You forgot one more point that he has always been, and this is an observation. Okay. एक तो पहला what you said was right, वरुण. Subscribers नहीं आ रहा, फेम जो होता है ना, एक टाइप का एक हो जाता है कि like low level पे you get like okay मेरे पहले बहुत इतने सारे थे, like I'm talking about 2020, right? September, November. But he has always mentioned about marrying to someone. अभी उसने वही कर दिया है कि like अभी कोई तो दिला दो. He said so many times. Ask anyone who has watched his session. कोई तो मुझे मिले, कोई टेरो का रेड, कोई गिनी बिनी जिनी करके कोई है, आई डोंट नो दैट लेडी, तो वो कह मेरी कब शादी होगी, कोई है। अभी लास्ट सेशन में वो उसको ग्रेस को कह रहा था देख तेरी सौतन आ गई, कोई लड़का था कोई। सो आई थिंक ही इज ऑन सिटिंग ऑन द एज, he is sitting on the edge. If people understands what I mean, they would, I don't want to go into detail, but I think he is on the edge, in a closet where he is yet to determine what he is, and once he finds his paradise, this thing will stop. Abhi kya hai ki abhi if you see the subscribers, man, 9,000, abhi main, if I just start my own channel, which I never intend to for this type of things anyway, and if I just blabber, I will get 9,000 anyway. And this is the guy who already had like not 50,000, 80,000, 100,000 subscribers. So that is what is pinching him. But the moot issue is he wants to get married, but he is sitting on the fence. पता नहीं है किस तरफ जाना है, ये तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, और तभी वो सबको पूछता रहता है कि मेरी शादी कब होगी,
और मेरा सोना बाबू का किधर है, वो लड़का है फिर भी, ठीक है। तो इफ यू ऑब्जर्व, ये नहीं हंसने की बात नहीं है, नहीं, सी नाउ एवरीवन इज लाइक पहले होता था कि अभी ओके चलो हाँ ये तो साला गुड है, ऐसा अपना बोलते थे, ठीक है, बट नाउ इट इज लीगल एंड आई अप्रिशिएट दैट, ठीक है। और ये जो भक्त ऑफ महादेव था वो भी शायद वही था, मेरी शक्ल ही दिखना चाहता था, अब आजा पता नहीं, आई डोंट नो हु दैट वाज, and I told him very carefully and very in a categorically in the chat that I am not gay. If you are, I am not. अगर मेरी शक्ल दिखनी है तो देख ले कभी भी, ठीक है। So he is on the edge and this is the problem. Once he finds a good wife or a husband, he will settle down. देखो इसका कोई सोर्सेस नहीं है, इसका कोई सोर्सेस नहीं है, ये पूरा आरबीएस फनी, आरएसएन सिंह, इनके पूरे लाइव सेशन सुन के आपके चैनल में अपना तड़का लगा के ये सब बकवास करता था। इसका कोई सोर्सेस नहीं है, कुछ नहीं है। आरबीएस फनी, आरएसएन सिंह जो भी लाइव सेशंस पे बोलते थे, ये अपना तड़का लगा के आपके चैनल में आके उसको एक्सपोनेंशियली बिग ब्रेकिंग बोल के लोगों को बेवकूफ बनाया इसने। और इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बोलना चाहता हूँ, ये जो सर्टिफिकेट होगा, ये जो सर्टिफिकेट लोगों को मिलेगा, ये चांदनी चौक के किसी पराठे वाले देगा वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। एक्चुअली किसी तुक्के से ना एक दो नैरेटिव ठीक हो गए, और हुआ ये था कि फ्रॉम जुलाई टू सितंबर अक्टूबर तक तो ये बहुत अच्छा चल रहा था, ये जो भी मूवमेंट था बहुत सही चल रहा था, बहुत राइट ट्रैक पे था। और अगर वैसे ही चलता रहता तो अभी तक शायद बहुत कुछ चेंज हो चुका होता, बट वो हुआ नहीं, बिकॉज हर चीज ना हर एक अलग अलग लाइंस में चले गए, सबके अपने अपने नैरेटिव्स हो गए, ये दिक्कत हुई। Sure. No, absolutely. I think you're right. And अब इस टाइम पे I don't think there's no looking back. जैसे कि अभी भी लोग मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था किसी का, I'm very surprised. अभी भी लोग ये फील करते हैं। I will see if I could I had कहीं तो लिखा था कि आप लोग दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, you should resolve. Guys, resolve करने के लिए, right, the things he has done, some of the things to my family, to even my family name now, how can you even imagine me, finishing off everything and resolving and saying ke sab kuch khatam? I mean, thoda sa to yaar, put yourself in my shoes and then you kind of put a comment. Is time pe, I don't think, okay, I'm going to highlight this beautiful message. Please read. I'm not scared of you, neither am I you. Your stupid धमकीज will not scare me. So, ये इंसान जो लड़कियों तक को धमकियां देता है, इसकी आप औकात क्या, इसको मैं और क्या बोलूं, इसकी और शर्म आनी चाहिए। I mean, शेफाली जी, do one thing. नेशनल वुमेन्स का जो नेशनल विंग है NCW, आप कांटेक्ट कीजिए। अगर इसने कुछ आपको धमकी दिया है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सीधा रेखा जी है उनको भेजिए। आप उनको इधर ट्वीट कीजिए या उनको फोन करके, आपको चाहिए तो मैं फोन नंबर भेजता हूँ, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। और अगर इसने कुछ ऐसी बकवास की है ना, स्ट्रेट अवे कंप्लेंट टू हर। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि उसको ना अटेंशन देना बंद कर दो। जब अटेंशन देना बंद कर दोगे तो अपने आप सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी हो ये रहा है कि अटेंशन मिल रहा है। नहीं यार, पता क्या है टेंशन की बात, पता क्या है, अगेन आई डोंट नो योर नेम बट मिस्टर इंडिया। अनूप, माय सेल्फ अनूप, मैं भोपाल से हूँ। ओके अनूप, सो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये मैंने बहुत बार इस चीज का जवाब दिया। एवरीबॉडी सेज इग्नोर हिम। इग्नोर तो यार हम बिल्कुल कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। हम जो कर रहे हैं वो उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं जो आगे बेवकूफ ना बने। अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ, नेक्स्ट उसका जो बड़ा प्लान, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया, राइट, ये जो केदारनाथ लेके जाना है या जो भी करना है, वहां पर अलग पैसा बनाए ना। ये सब जो स्कैम चल रहे हैं ना लोगों के, इसको रोकना बहुत जरूरी है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दैट इज माय ओनली पॉइंट। गाइस, प्लीज बी माइंडफुल। ये वेबसाइट का जो मैंने अभी आप सबको दिखाया, प्लीज उसको ध्यान से दें। इतनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो यार कोई और भी नहीं मांगता। अभी मैं आपको फिर वही बताऊं कि अगर कोई वेबसाइट पे आप रजिस्टर करने भी जाओ, यू चेक थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स कि यार क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस वेबसाइट पे हर वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ली जा रही है जो जिस इंफॉर्मेशन से आइडेंटिटी फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट आराम से हो सकती है।
किसी के लिए भी हो सकती है। और दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डेटा बेचा जाता है। यहाँ पर Exactly. कंपनीज हैं यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत कंट्रीज में ऐसी जगह पर हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। जो आपको स्पैम कॉल्स आती हैं यहाँ पर, जो आपको इंफॉर्मेशन सेल करते हैं कि आप सोलर पैनल लगवा लें, आप दवाई ले लें, आप ये कर लें, उन सबको ये बेची जाती है फॉर अ प्राइस ऑफ $1 to $5। आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, राइट फ्रॉम योर फिजिकल एड्रेस टू योर फोन नंबर टू योर सोशल मीडिया हैंडल्स। आपको जो एड्स आएंगी, दोज विल बी टारगेटेड एड्स बेस्ड ऑन व्हाट दीज गाइस सेल। आप लोग पागल हो जाएंगे देख के। प्लीज समझें इसको, टेक इट रियली सीरियसली। Varun, can I say something? It is little bit technical. Can I say something? I just did a scan on their website. Let Noshiji say something first. Yes, Noshiji, please. If we remember some time ago, we are talking about the PR team working for the B-Town Betty. So this guy must be working for the PR team, and that is the reason. So that those people who are still talking about the B-Town Betty, वो लोग अगर उसके झांसे में आएंगे thinking they are SSR warriors, और वो लोग अगर उसके झांसे में आके उसके आईडी देंगे, तो those goons will be able to target them. This is quite possible answer. Okay. तो ये सब चीज तो हम भूल गए, लेकिन ये चीज हम लोग याद करना चाहिए कि अगर वो सचमुच पीआर टीम वाला है B-Town Baddies का, तो those who will subscribe to him thinking that they are SSR warriors, वो लोग के नाम जाएंगे और वो लोग तो फिर यहाँ वहां से पकड़ के टारगेट करेंगे उनके ग्रुप। जैसे शेरा जो है, सन ऑफ सलीम खान का शेरा, वो कितने लोगों को फोन पे ये कर चुका है। Yeah. So there must be so many other bounces of this guy. It's quite possible. और अभी वो लोग का टाइम खलास होने आया, and that is why they are still, fettered. ये possibility है. So we have to stop. Yes, what you are doing is very right thing. Yeah. All right. Okay. I'm gonna end this session. But before I do that, one last time, any comments, Gaurav? Anything you want to say? Yeah. I just want to say one thing. If anybody is calling names to any SSRians, I think all other SSRians should take legal action against him or her, whosoever he or she is. If Varun, I have just now in your WhatsApp group, I have shared NCW details. If this guy has abused any of the women, yes, just flash that NCW details on the screen so that they can take down. Okay. Let me do that. And Rekha ji is the main person. That's what I was trying to say. All SSR other bona fide SSRians should take legal action. Yeah. So NCW का NCW के सभी list, in fact 10-15 members are there, and Rekha Sharma, I believe, she is the main chairperson. So अगर आपको complaint करना, direct complaint करो, और आपके पास कुछ है screenshot वगैरह, directly उनके Twitter पे share करो और बोलो कि ये ऐसे मेरे को harass कर रहा है. And this is what Shefali said. So if Shefali is looking at this, she can do that. So again, guys, this is the National Commission for Women. Of women. nwc.nic/commission, and वहां जाके look for the telephone directory. Just add the STD code 011 and dial the number whichever it is, and whatever complaint you have, please give it. And there's an email ID as well, वहां पर. Yeah. So please take care, and of course do the necessary, because this is also an important. Yeah. Okay. Great. Thanks for doing this. Thanks, Sachin. All right. Why don't you close last comment before we end the session?
Sachin. Yeah, I mean, regarding this fake guy, I mean, no need to say anything else. But Yeah. regarding this particular Mahavinash Agadi, I mean, this government has to go, boss. It's as simple as that. I mean, these guys have literally messed up the whole state, and this is coming from Maharashtrian myself. They have messed up the whole state. This government has to go. Either there has to be a central rule, or a new government has to come. BJP has to come in power at any cost. Sachin, you mentioned you have something important. What was it? All right. Thank you, Sachin. All right. Yes, Mr. India. Any reason why you picked Mr. India? Can you hear me? Who are you talking to, Varun? I don't know if I'm having a network issue. मिस्टर इंडिया जो है मैं एक्चुअली गेम भी खेलता हूँ तो मेरा गेम चैनल है जिसका नाम मेरा जो इन गेम नेम है मिस्टर इंडिया है तो मैंने इसलिए रखा हुआ है और बेसिकली ना हाँ अब आ रही है बात प्रॉपर हाँ आ रही है अब प्रॉपर है नेटवर्क हाँ एक्चुअली मैं गेम्स खेलता हूँ और होता क्या है ना कि गेम्स में ना दूसरी कंट्री के लोग इंडिया वालों से बहुत चिढ़ते हैं तो इसलिए मैंने जो अपना इन गेम नेम है वो मिस्टर इंडिया ही रखा हुआ है कि भाई मैं तुमको मारूंगा भी और अब तुम चिढ़ लो तुम्हें चिढ़ना है तो इसलिए मेरा गेमिंग चैनल है जिसका नाम है मिस्टर इंडिया और मैं इसी नेम से ही बेसिकली वो करता हूँ Got it. All right. Thank you. Tennis, Any other comments before we end the session? Tennis Clash. Anyway. क्या चीज? Tennis Clash. ना मैं दो गेम्स खेलता हूँ एक पबजी है और एक वर्ल्ड ऑफ टैंक्स है शायद और हाँ मैं बस एक चीज़ और कहना चाहता हूँ अपना ये लाइव क्लोज करने के पहले कि इंडिया में जो कोविड का सिचुएशन है वो हम सब ने मिलके जो सेकंड वेव है वो हम लोगों की गलती से आई है वो बहुत बड़ी बात है बिकॉज सब ने ना बहुत लाइटली लिया था इसको और बिना मास्क के लोग घूमे सब कह रहे हैं कि भैया कोविड तो क्या बोलते हैं स्कैम था ऐसा था वैसा था ये सब हो चुका और अब इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों को ब्लेम करने से बेटर है कि अब जब ये ओवर हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं तो अभी शायद 325 लोग देख रहे हैं लेकिन उन 325 लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने देख ली है कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है तो प्लीज हो सके तो पेड़ लगाओ जितने हो सके On that note, I want to bring it to everyone's attention, and I tend to agree with Naushir ji. Kemcho Naushir ji. Fine. There was a series, television kind of a series by Nawazuddin Siddiqui और ये अपना कौन था ये फालतू में था एक मूवी नाम आई थी ना फालतू प्रोड्यूसर का बेटा है जिमी Bhagnani, something Bhagnani. Okay. So this was like 5 years ago. They showed it was a television series या कोई ऐसा ही था कुछ. I saw it 5 years ago, where they were saying that they showed a future 2030 और 2060 या वैसा फ्यूचर में दिखा गया सारे स्पेसशिप जो उड़ रहे हैं वैसे वगैरह वगैरह उसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग जो थी वो था ऑक्सीजन पीपल इतना सारा पॉल्यूशन हो गया तो इंडिया वो दे ट्राई टू मेड अ साइ-फाई but it is coming to a reality where oxygen which was kind of cheap as sorry to use this word but it was cheap as anything like we breathe oxygen scientifically right but it's not a proper oxygen agree all of us we breathe oxygen and we exhale carbon dioxide ये वो जो हमको पढ़ाया गया है बचपन से है ना और प्लांट जो होते हैं ट्रीज होते हैं वो ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं तो ये है साइंस ठीक है वो किसी ने लिखा वी अग्री टू येट वी go for an oxygen cylinder which is a purest form of oxygen that means if someone was to challenge it and Varun this is for your sort of thing as well we have to challenge कि जो हमको पढ़ाया गया है कि like what we are breathing are you sure that it is like oxygen or something else और मैं छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगा and you can try right now if whatever you are breathing if your breathing is fine if you want to have a better breathing
आपका जो नाक जो है ना, नाक के नीचे का थोड़ा सा ऊपर कर दो, and then you try to breathe. You can try it online right now. Varun, you can do it too. This is something that I found. I won't disclose the source, but I have learned from a very, well known. Okay. Try to do it. Yeah. All of you guys. If you breathe normally and then you just lift your nose a little bit and then try to breathe, it will be much more better. Got it. Huh? All right. हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? Yeah, थोड़ा सा obviously better होता है. But what I'm gonna do is I'm gonna get more videos and some content is shared as well, and then I will share it with all of you, because there are certain videos which have been sent to me, and that also had something like this. तो मैं सबके साथ share करूँगा, and but yeah, I'm gonna end this session like in next 1 minute. So anything else? Varun, I want to say one thing. Sorry, Varun. I'm extremely, I Varun, want to say one second, Sachin. Let Vishnu finish. 1 second. Yeah. Yes, Vishnu, please go ahead. So going back like few half an hours back, वेबसाइट का मैंने वो स्कैन किया, उसमें काफी सारे फ्लॉज है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, आई कैन नॉट रीड इट बट आई हैव इट. और सब सारे लोग जो भी सुन रहे हैं, चाहे वो ये भक्त ऑफ महाकाल हो या राहुल शर्मा हो या जो भी हो, ठीक है, यू हैव टू गो and check your security controls when you are coding a website. Okay, वो मेरे पास स्कैन के रिजल्ट्स है, वो फ्री में होता है. और शुड आई से वो तो ऑनलाइन ही है, तो कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा जो भी है. इट्स कॉल्ड SSLLabs.com. पॉलिस कंपनी का फ्री स्कैन होता है. वो टेक्निकल है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आई एम अज्यूमिंग दे मे नॉट अंडरस्टैंड, बट द टेकी गाइज हु आर टेक सेवीज, they will understand what I'm talking about. कोई भी वेबसाइट हो, you can do the scan और उसके अंदर सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे कि कितनी फ्लॉज है, और वो फ्री है. So that is only 30% of the report. Okay. If you pay for them, you will get the comprehensive report. And then that's all I wanted to say and convey. सबको जय भारत, and I hope everyone gets better and this whatever COVID thing goes away in a blink of an eye. Sure. I personally wish that. मैं we all लास्ट पूछना चाहता हूँ. Okay. Sure. Thank you, Vishnu. Thank you all. Bye. एक लास्ट पूछना चाहता हूँ कि SSR ने जो 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाई थी, उसका क्या हुआ? हाँ, उसके बारे में Okay, let's talk in a different session. इसके बारे में, क्योंकि कुछ कंपनीज और भी नाम निकल के आए थे, and we will share more information about it in a future. सुशांत का जो सेशन है, मैं भी सर्च करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे, मैं भी सर्च करके बताऊंगा. Yes, thank you so much. Yeah, we'll talk about it. Yeah. Right. Varun, first of all, I want to apologize to anyone जिसके डिस्कशन में मैंने इंटरफेयर किया. Maybe because of excitement I have done so, including Dhruva ji. I'm sorry that I have come in between the discussion, and if it has hurt you, I'm extremely sorry. And I would like to request Shefali ji that if she has any apprehensions of filing any complaint regarding this, I can do it on your behalf. I can call National Commission Women on your behalf, and I am willing to share whatever they want to say, Sachin, so that you can share whatever information you have with them. Let me tell you something. अगर कोई और होता तो मैं क्या देता? Shefali, she can very well handle everything. So she doesn't need anyone, neither you nor me nor anybody, to take any action. Absolutely great. She is one fierce lady, जिसको सिर्फ अगर आप information दे दो, उसके बाद आप सिर्फ वो कहते हैं ना, एक लाइन होती है. So I request Shefali ji to set an example. I request Shefali ji to set an example. Yeah. And then what we can do is we can encourage other women, if they're getting harassed by some other people, we can directly forward their complaint to Rekha ji and NCW. Simple. Perfect. All right. Thank you so much. Thanks, Sachin. All right. Before I take Raman ji, Nausha ji, any last comment? Because then I'm gonna take off everybody from the stream. Yeah.
stay strong, keep your immunity high by not being fearful, Yeah. and ignore the WhatsApp university. All right. Thank you so much, Noshirji. Take care. And I'm just going to keep Ramanji in the stream now. So thank you, Noshirji. Thank you, Mr. India. Thank you, Sachin. And कैसे हैं रमन जी आप? A lot of people वरुण जी wanted to नमस्कार। talk to you. What lot of people wanted to speak to you. So इसलिए अब आपको मैंने स्क्रीन पे रखा है. Please अब आप थोड़ा सा अपडेट भी दें. How is everyone at home? And how are you doing? वेल वरुण जी बाकी तो ठीक है। मेरे एम्प्लॉइज 14-15 एम्प्लॉइज कोविड पॉजिटिव हो गए एक तो, और दूसरा 3 टीम मेंबर जो मेरे साथ काम कर रहे थे, इसमें एक दिल्ली से थे, एक पटना से थे और एक मेरे यहीं पे थे। 3 लोग वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए। मम्मी अब कुछ ठीक है। मैं इस पिछले 3-4 दिन से कोशिश कर रहा था कि लोगों को अपडेट दे सकूं या बात कर सकूं। इतना बुरी तरह से उलझा हुआ हूं और इतनी बुरी तरह से, और अब तो ये पोजीशन आ गई है कि शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं है एनसीआर में। बहुत बुरा हाल है। लोगों को लोग बुरा भी फील कर रहे हैं। 2-4 लोगों का आया है मैसेज मेरे पास, उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप इतनी लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हो 3 दिन बाद। अब तो मेरे जिनके लिए मैं आपसे मदद मांग रहा था वो एक्सपायर हो गए। देखिए कुछ चीजें जो है ना गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली हैं। अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो पहले वो मेरे पास अवेलेबल था तो मैं अवेलेबल करा रहा था, लेकिन अभी उन्होंने कुछ पर्टिकुलर लोकेशन बना दी है जहां पे वो इंजेक्शन अवेलेबल है, हर सिटी में, हर स्टेट में। वो एक अलग सिचुएशन हो गई है, उसमें मैं डायरेक्ट किसी को भी ये इंजेक्शन दे नहीं सकता। रही बात बेड्स की, और अब इस टाइम पे पोजीशन मेरी ये है कि मुझे अपने लोगों के लिए भी बेड अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। जो लोग ले सकते थे, जिन लोगों का कर सकता था, उनका किया भी है। अभी ये जो नंबर्स आ रहे हैं, फोन नंबर्स जो अभी इस टाइम पे लोग बांट रहे हैं एक दूसरे से सोशल मीडिया पे, maximum numbers are not reachable or they are not picking up the phone. I'm sure that they are also in the same condition, that they are not in a position to help people this time, और एक्स्ट्रा मतलब एक्सेप्शनली ऑक्यूपाइड है। सबसे बड़ी बात ये है। और देखो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप मुझे ब्लेम करें या वरुण जी को ब्लेम करें कि आपने मदद का वादा किया और आपने फोन नहीं उठाया या आप बात नहीं कर पाए। हम लोगों की पोजीशन पे आकर के देखो, शायद मुझे भी हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, फीवर फील कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से और मैं अपनी मेडिसिन ले रहा हूँ। लेकिन जो हालात हैं इस टाइम पे, उसके अंदर आप एक दूसरे को ब्लेम या एक दूसरे को गिल्टी ना कराएं। इंस्टेड हम एक दूसरे का हेल्प करें अगर कहीं कर सकते हैं तो। और पता नहीं जैसे ये पोजीशन कब तक रहनी है ये, तो होपफुली जितनी हो सकेगी हेल्प करेंगे। मैसेज करें जो हो सकता होगा। अभी भी मेरे पास एनसीआर में कुछ बेड्स अवेलेबल हो सकते हैं, वो भी ज्यादा नहीं है, 5-7 से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। एंड अगेन ऑक्सीजन मिल जाएगी लेकिन वेंटिलेटर नहीं है। ये फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्तों के, कुछ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के कहीं ना कहीं पे कनेक्शन में हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ बेड्स रखे हुए हैं, और तो और कुछ तो ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सरे मशीन या जो बोलते हैं उसको अल्ट्रासाउंड की मशीन हटा करके वहां बेड लगाए हैं। ये भी पोजीशन है। तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है और मुझे लगता है कि अभी एक डेंजरस वेव आनी बाकी है जो मई के मिड में होगी। उसमें तो मुझे लगता है कि हमारा हाल ठीक नहीं रहने का है। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज हमें जो बचा सकती है वो है हमारा मनोबल। अगर हम अपने मनोबल को मजबूत करके ये सोच लें कि हम सब जीतेंगे तो जरूर जीतेंगे। और अगर ये सोचते रहें कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और खुद भी हार जाएं और अपने पेशेंट को भी हरा दें, तो सच बता रहा हूं इसमें मनोबल की बहुत जबरदस्त एफर्ट है कि अगर आपका मनोबल मजबूत है तो आप जीत जाओगे। और सबसे बड़ी बात जो अब तक मैं हर डॉक्टर से बात करते हुए कह रहा हूं, और जो बात मुझे उन्होंने बताई है कि आपको हल्का सा भी सिम्टम दिखाई देता है तो आप
3 दिन की एंटीबायोटिक अजिथ्रो 500 प्लस एसिक्लोपैरासेरेशी और 1-2 दवाइयां जो डॉक्टर से बात कर सकते हैं आप उसी टाइम इमीडिएटली वो लेनी शुरू कर दें 3 दिन के लिए। और अगर आप उसको लेट करेंगे कि शायद ठीक हो जाऊंगा, वायरल है, अगर हो भी वायरल तो भी ये 3 दिन अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें पहले, मेरे कहने पे नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इमीडिएटली ये 3 दिन का कोर्स जरूर करें। ये मेरी एक राय है। जिन लोगों ने नहीं किया उनकी कंडीशन खराब है, इफ आई कंपेयर इट विद दोज पीपल हु हैव जस्ट टेकन द मेडिसिन। तो कोई ऐसी बात अपने मन में ना लाएं, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूं। और अब आप मानेंगे मुझे, जो जो इस टाइम पे जो मेरे पास जो लोग मदद मांग रहे हैं वो ये कि लाशें जलाने के लिए शमशान अरेंज करो। सर वो बताओ अब मैं कहाँ क्या 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 कर सकता हूँ मैं? आई नो। नहीं, मैं भी अब ट्राई कर रही हूँ। 1-2 लोगों ने डिटेल शेयर की है, मैं ट्विटर पे भी डालूंगा और ग्रुप में भी डालूंगा। हालांकि मुझे वो बहुत ही मैसेज पढ़ के बहुत लो फील हुआ था, बट वो सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज के लिए लकड़ी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं कि अगर किसी को वो भी चाहिए तो वो उस चीज के लिए भी एक नंबर आ गया है। तो अनफॉर्चुनेटली व्हाटएवर दैट इज, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद एवरीवन जैसे ही आता है। और भी जो नंबर आते जाएंगे, वी विल कंटिन्यू टू शेयर इट ऑन सोशल मीडिया हर जगह। बट प्लीज, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रमन जी ने भी बोला है, मनोबल। वी हैव टू चीयर आवरसेल्फ अप, वी हैव टू हैव दैट फेथ, दैट कॉन्फिडेंस और वो पॉजिटिविटी कि हम इसको फाइट कर पाएंगे। अगर हम वो रखेंगे, वी विल डेफिनेटली विन अगेंस्ट दिस। अगर हम लूज कर जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे, COVID will win the battle. So we cannot let that happen. So please, COVID को fight करें with a lot of positive energy and lot of positivity. मैं तो यही कहूँगा। तो रमन जी, थैंक यू एक बार फिर से। आपने बहुत लोगों की, जितना भी आप करता है, आपने बहुत ज्यादा हेल्प की और आगे भी मुझे पता आप करेंगे। बट प्लीज प्लीज स्टे सेफ, आप अपना भी ध्यान रखें, अपने मदर का भी, अपनी फैमिली का, सबका, और लोगों का जितना कर सकेंगे ठीक है। नहीं तो पहले योर ओन हेल्थ कम्स फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट। तो मैं तो इसी चीज को कहूंगा। और कुछ आप कहना चाहते हैं या कोई जी बात? वरुण जी, एक तो और मैं ये बोलूंगा कि जितना हो सके घर में रहें। अगर लॉकडाउन गवर्नमेंट नहीं लगा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बाहर घूमते रहें। सचमुच कंडीशन अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब आप किस जगह पे कोरोना की चपेट में आ जाएंगे और वो कैरियर बन के अपने फैमिली को दे देंगे वो कोरोना, पता नहीं चलेगा। और एक बार आपके घर में कोरोना घुस गया तो पता नहीं क्या करके निकलेगा। इस टाइम पे सचमुच बहुत बुरा हाल है। मतलब आप ये सोचो कि लावारिस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। गुड़गांव में एक शमशान घाट है जिसके बाहर 3 लाश छोड़ करके चले गए वो लोग। कुछ बाहर के थे, बिहार के या यूपी के कहीं के थे वो लोग, और वो छोड़ करके चले गए हैं। आप ये समझिए कि जो अस्थियां हैं लोगों की रखी हुई हैं स्टोर रूम में, लॉकर्स में, जगह नहीं है शमशान में वो रखने की। पर्चियां लगा लगा करके वो रखे चले जा रहे हैं और उसको उठाने वाले उठाने नहीं आ रहे हैं। ये भी सचमुच ये पोजीशंस हैं। ये गुड़गांव की बात बता रहा हूं मैं आपको, गुड़गांव में ये पोजीशन है। और तो और एम्बुलेंस की लंबी लंबी लाइंस हैं जिसमें डेड बॉडीज रखी हैं और वो चाहते हैं कि इनको जला दिया जाए और जलाने के लिए अंदर जगह नहीं है। ये सब चीजें समझें, अपना बचाव रखें। हेल्प जितनी हो सकती होगी वो बहुत कम है। इस टाइम पे कोई हेल्प आपके काम नहीं आ रही है, बहुत कम हेल्प हो पाती है। और आप ये सोचें कि 80 से नीचे लेवल पे अगर ऑक्सीजन चला गया तो आप उसको वेंटिलेटर पे लाना ही पड़ेगा, और वेंटिलेटर आपके पास है ही नहीं, आप कहां से लाएंगे? तो इसलिए हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, मैं देख रहा हूं इस टाइम पे पोजीशन बहुत लोग चले गए हैं मेरे साथ पिछले 1 हफ्ते में। जिन लोगों की हेल्प की उन्होंने भी मुझे थैंक यू के साथ ये बोला कि हम उनको बचा नहीं पाए, और जिन लोगों की नहीं की उन्होंने भी मुझे मैसेज करके बोला कि आपने फोन नहीं उठाया या आप हेल्प नहीं कर पाए तो हमारे वो चले गए हैं। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। देखिए मैं गॉड नहीं हूँ, मैं इस प्रोफेशन में हूँ कहीं ना कहीं पे। फार्मास्यूटिकल कंपनी की वजह से मेरे कुछ लिंक्स हैं जिसकी मैं हेल्प कर सकता था, मैंने की है, आगे भी करूंगा।
लेकिन इसको आप इस तरीके से ना लें कि मैं आपका फोन नहीं उठाना चाहता था या आपकी हेल्प नहीं करना चाहता था। मैं फिर से एक बार, मुझे बहुत दुख है जिन लोगों के लोग चले गए हैं, जिन लोगों की फैमिली में से लोग चले गए हैं, या मुझे मालूम है क्योंकि मेरे सामने मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड वो भी चला गया अभी 2 दिन पहले, वो भी चला गया और ऐसी कोई एज नहीं थी जाने की। तो सिचुएशन वर्स्ट है। जितना हो सके घर में रहे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं होगा अगर घर में रहेंगे तो, लेकिन घर के बाहर ज्यादा निकलेंगे तो चांसेस हैं कि आप कैरियर बन के उसको उठा करके घर पे ले आए। अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने परिवार के, माँ बाप के, इन सब के बारे में सोचें। हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम बाहर निकलें, एडजस्ट करें। 1-2 महीने हैं, निकल जाएंगे। ये निकल गए तो हम लोग जीत जाएंगे, अदरवाइज बहुत बुरी वेव आएगी जो बचा नहीं पाएगी हमें। याद रखें इस चीज को। मैं आपको आज भी अल्टीमेटम दे रहा हूं। मुझे और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी कहीं भी आपको लगता है कि मेरी बात में सीरियसनेस है, या कहीं भी मुझे आपको लगता है कि मैं इन सब चीजों को सामने देख रहा हूं, तो आप प्लीज अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, मत जाएं बार बार इधर उधर, प्लीज रिक्वेस्ट। थैंक यू वरुण जी। थैंक यू रमन जी। मैं सेशन एंड करना चाहता हूं, बट उससे पहले ये एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रमोद जी का। कैन यू आस्क रमन जी, व्हेन विल द क्रॉप बर्निंग स्टार्ट इन नॉर्थ इंडिया? इट मे वर्सन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। I didn't get you, sir. Will you repeat the question, please? Basically, crop burning, जो फसलों को जलाया जाता है, और वो कब शुरू होगा? वो अभी मुझे लगता है कि मई में फसलों को जलाते नहीं है, वो पराली जलाते हैं। जो पराली होती है उसको जलाया जाता है, फसलों को तो काट लिया जाता है, उसके बाद जो उसकी जो जड़ें बच जाती हैं उसको जला देते हैं। वो मई में शुरू होगा। ओके। तो उससे मुझे पता नहीं है उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ना है इस वायरस पे या नहीं, लेकिन वो मई में शुरू हो जाएगा। लोग पराली जलानी शुरू कर देंगे, और हरियाणा पंजाब में तो बहुत जलाते हैं। Alright. Yes. Okay. So, okay, thank you so much, Raman ji, for everything. Stay blessed, stay positive. मैं तो यही कहूँगा. But at the same time, किसी भी तरह की हम कुछ हेल्प कर पाएं, प्लीज लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली बी देयर। बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे पता है। सो गाइस, जस्ट बी माइंडफुल, देयर आर थिंग्स, ही हिमसेल्फ इज नॉट फीलिंग वेल, बट जितना भी वो कर सकेंगे हेल्प, जितना भी वो वो कनेक्ट आपको करना चाहेंगे या कर सकेंगे किसी से, वो कर देंगे। बट प्लीज लेट्स बी माइंडफुल कि दिस थिंग इज रियली टेकिंग अ टोल ऑन एवरीबॉडी। तो just be positive and keep fighting this unknown enemy, this invisible enemy. Together we will get out of it successful. So एक बार फिर से thank you so much everyone. Take care. Good night, and I will see you very soon again. Bye for now. Good night.